Hui, 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 hui. Everybody, hui, 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 hui. And all the ladies will sound, hey, come on. Yeah. Hui, 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 hui. Louder! 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 Come on! Louder! Hallelujah. Come on, Nagaland. Are you ready to worship the Lord? Amen. Just as Pastor Babang said, this is an extra night. Amen. Said, there is so much more for me. Come on, say, there is so much more for me. No matter who you are, no matter how much you have seen, there is so much more for you tonight. Amen. Wherever you are, come on, say there is so much more for my family. My God is more than enough. Yehovah Yara, He's more than enough. My God is more than enough. Amen. Come on, can we just exalt His name? Jesus, we worship you. We worship you. Yeshu, हम आपकी आराधना करते हैं. आपके जैसा और कोई नाम नहीं है. यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं. यीशु नाम. We worship you, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम. यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. Come on, lift up your hands wherever you are. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की इस जगह को भर दे उसकी आराधना से. यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु तेरा नाम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम,
Yeshu naam. Come on, every voice here. Lift it up for the King of Kings. Come on, give him some glory here. Yeshu naam. Yeshu naam. Yeshu naam. Yeshu naam. Everybody up there in the gallery, come on, lift up our voices. Lift up a beautiful symphony of worship before the Lord. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, ki jai. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam. Yeshu naam, Yeshu naam, ki jai. Yeshu naam, 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 ki jai. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, ki jai. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, ki jai. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, ki jai. We lift up your name, Jesus. Let every voice that is praising your name, lifting your name, be a reason to glorify you this evening, Lord. Thank you, Jesus. Every heart yielded to you, every voice lifting your name. Let it be a testimony in this nation and in this state of Nagaland that Jesus is the King. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland for Christ. Nagaland for Christ. Lord, we thank you. These are your sanctified people, bought with your blood, washed with your blood, sanctified and made holy with your blood, made sons and daughters, born of your spirit, born of your word, not of the will of man, but of the will of God. Thank you, Father. We worship you. Thank you, Jesus. We release the name of Jesus over this land of Nagaland. Thank you, Jesus. You are starting a new work in this state. Lord, every tongue lifted up for your name, for your glory. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name. And the church said, all right, we want to release an anthem over this land this evening. Today is the last, the grand mega finale of the Revival Fest. Amen. And we want to release this anthem over Nagaland. Say, Nagaland belongs to Jesus. Say with me again, Nagaland belongs to Jesus. Come on, you guys up there, say, Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Jesus. Are you ready to learn a new anthem over this state of Nagaland?
Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Say, Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Say, Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Hey, Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Come on, clap your hands. We are one tribe, washed in His blood. One people praising His name. Sing with me, one tribe, washed in His blood. One people praising His name. Can you sing it out? One tribe, washed in His blood. One people praising His name. One tribe, washed in His blood. One people praising His name. Sing Nagaland. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Hey, Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Come on, somebody clap your hands. We are His sons and daughters. We speak blessings over this land. Come on. We are His sons and daughters. We speak blessings over this land. We are His sons and daughters. We speak blessings over this land. We are His sons and daughters. We speak blessings. Come on, only the drums. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Come on, pause. Nagaland, are you ready? We were coming on our way and we heard everybody call this meeting the revival. Is it the revival? Is this meeting the revival? Come on, mean it. Sing it like it's a revival. Are you ready, Nagaland? Pastor was earlier saying that Nagaland is never going to be the same. It's going to change for Jesus. We're going to sing this again, and this time we want you to sing, okay? The song is pretty easy. Are you ready? Come on, drums, just the kick. Are you ready? 1, 2, 1, 2, everybody! Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland. Dimapur, I think you can do better. Do you know what the population of Dimapur is? Half of Dimapur is here. I think Dimapur can do better. Are you ready? 1, 2, everybody. Louder. Come on, from the stairs. From the steps, come on. Nagaland.
Louder. Are you ready, Nagaland? 1, 2, everybody. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Come on. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. One tribe washed in His blood, one people praising His name. One tribe washed in His blood, one people praising His name. One tribe washed in His blood, one people praising His name. One tribe washed in His blood, one people praising His name. Everybody, Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. We are His sons and daughters, amen. We are His sons and daughters. We speak blessings over this land. We are His sons and daughters. We speak blessings over this land. We are His sons and daughters. We speak blessings over this land. We are His sons and daughters. We speak blessings over this land. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. Nagaland belongs to Jesus. Nagaland. Come on, somebody put your hands together. We are His church. We are His church. Come together. We take authority in His name. We are His church. We are His church. Come together. We take authority in His name. We are His church. Come together. We take authority in His name. We are His church. Come together. We take authority in His name. And we declare, Nagaland belongs to Jesus. Nagaland belongs to Him. 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 We bless Nagaland. We bless Nagaland. Come on. We bless Nagaland. We raise our hands towards heaven and we say, we bless Nagaland. We bless Nagaland. Mean it with your heart. We bless Nagaland. We bless. We sing. We bless Nagaland. Oh, we bless Nagaland. We bless. We bless
Come on, who's ready to praise Jesus in this place? Hallelujah! Hey! You ready? Let Nagaland, that is breath. Hey, praise the Lord. And praise the Lord. Say, be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise His name. Praise the Lord, oh my soul. Praise His name. Praise His name. Oh my soul. Let Nagaland, that is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let Nagaland, Nagaland, that is breath. that is right. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, praise His name. Woo-hoo! Come on, it's not time over. Say, I'm just getting started. Are you ready? Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. Sing it out. वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. Sing it out. वो जिंदा है, 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 आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं. आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है. आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं. आनंद है, मैंने पाया नया जीवन. मैं बदला सदा के लिए. मैंने पाया नया जीवन. मेरे पाप सारे धुल गए. मैं बदला सदा के लिए. Oh, come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We worship you, Jesus. Hey! यहोवा राजा है सामर्थ से भरा. अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा. यहोवा राजा है सामर्थ से भरा. अनादि परमेश्वर
परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा hey! Come on, clap! समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा hey, 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 hey. आओ मिलकर हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सिर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। आओ मिलकर हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा hey, hey. बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा यीशु मसीह की। बोलो नागालैंड के राजा यीशु मसीह की। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा।
on, tell your neighbor, I will live. I will live and not die. Tell your neighbor, I will live and not die. I will declare the works of King Jesus. I will declare the works of King. Say, I'm a witness of His goodness. I'm a witness of His goodness. I will live. I will not die. I will not die. I will declare Declare the works of King Jesus. I am a witness of His goodness. Hallelujah! Hey! Come on. Hey, 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 hey.
will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, the enemy's defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare this you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. But what I say, In Jesus' कोई तो बोले यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हे Two, 1, 2, everybody jump! jump, jump. Come on, dance it off for your king. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। Come on. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो। Come on everybody, raise your voice. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम जय जय। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। Come on, sing it out. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। Hey, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Come on, तो गाओ हालेलुया। Hands up in the air, everyone. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। कौन है दीमापुर का राजा? कौन है नागालैंड का बादशाह? कौन है दीमापुर का राजा? कौन है नागालैंड का बादशाह? बोलो यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। Come on, say this with me one more time. कौन है दीमापुर का राजा? कौन है नागालैंड का बादशाह? कौन है दीमापुर का राजा? कौन है नागालैंड का बादशाह? बोलो यीशु है उसका नाम, अरे यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है दीमापुर का राजा? कौन है नागालैंड का बादशाह? कौन है दीमापुर का राजा? कौन है नागालैंड का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। उसके हमने उद्धार पाया है, उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है दीमापुर का राजा? कौन है नागालैंड का बादशाह? कौन है दीमापुर का राजा? कौन है नागालैंड का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जय, तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार।
Come on, are you ready to rejoice in the presence of the King? है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। मिलके बोले है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू। 1 2 3 4 जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। बोले है जावेदा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु। आप बताकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संग मिल गाए 1 2 3 4 है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए। Come on, people in the steps, raise your hands towards heaven. Hallelujah, 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 hallelujah. संग मिल गाए hallelujah, संग मिल गाए hallelujah, hallelujah, hallelujah. संग मिल गाए hallelujah, hallelujah, hallelujah. संग मिल गाए 1 2 3 4 है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा, है जावेदा, है जावेदा। Come on, come on, come on. Wherever you are, lift up your hands right now. यीशु के लिए अपने हाथों को उठाएं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Every other name is falling down, but the name of Jesus is rising tonight. सारे नाम गिर गए, यीशु का नाम ऊंचा रहेगा सदा के लिए। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हाथ उठाकर बोले, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु Just declare the name of Jesus over this place. Declare the lordship of Jesus over this place. Declare the kingship of Jesus over India. Father, we thank you for your Son, Jesus, for the price he paid for us, for dying on the cross as a substitute for us. And tonight we lift up our hands, and from the bottom of our hearts we say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And all the people of God say amen, amen, amen. Let's give the Lord a mighty shout of praise, church. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Come on, come on, come on! Give a shout of victory! Give a shout of victory! Shout of victory! Shout of victory! Thank you so much. You may be seated, please. Tonight,
It's gonna be an amazing night. Like we said earlier, everything will be extra, everything will be double portion. Amen. Before I invite the man of God, Apostle Ankit, I'd like to request the ushers to please get ready with your offering bags. This Nagaland Revival and Healing Festival was supposed to be over, right? But I believe the Lord loves the Nagas so much. Not only the Nagas, but people that have come from all over India. Thank you so much for coming. I would like to see the hand of those people who are outside Nagaland, who have come from outside Nagaland. Can I see your hand, please? People from outside Nagaland, come on, can I see your hand? Can you wave? Come on, Nagas, let's give them a big round of applause. Thank you so much. Thank you so much and blessing our land. We love and honor you. Hallelujah. It's going to be an amazing night. Wait. Before you sow, I want you to hold your seats. Amigan so nokura ko de offering ni dia ko de. Abuni ki offering di bole ase ito hold ko ribi. We're going to pray over the seed that you're going to sow tonight. Let's believe that the seed that you are sowing, it will bear fruit. If you're looking for breakthrough, name your seed breakthrough. If you're looking for healing, name your seed healing tonight. If you're looking for restoration, name your seed restoration. If you are grateful to God and you are thankful to God, name your seed thanksgiving. In your own ways, name your seed tonight. Hold your seeds together, everybody. Can you lift up your hands, everybody, if you're holding your seed? I want to pray for your seed that you are sowing tonight for this revival. Let's look to the Lord in prayer. Father, tonight, in the name of your Son, Jesus Christ, we come to you. And with a cheerful heart, we are sowing, Lord God, believing that we are sowing in a very fertile soil. And we name our seed according to the needs that we have. And we believe that you will honor our giving tonight. So Father, even as we give, I pray that Lord God, that Lord it will bear much fruit. Father, I pray for those people, if they are not in position to sow their seed. Father, your word says, you provide seed to the sowers. So may you provide seed for each one of them, so that, Lord, they will continue to sow and reap what they are planting. So we receive every seed tonight and help us to steward it. Give us the wisdom, Lord, to steward the seed that is coming towards your kingdom. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen. Go ahead, the ushers will go and collecting the offering. Tonight is a very special night. And we as Nagas,
we have beautiful culture. And tonight we want to invite and welcome the man of God whom the Lord has assigned, ordained, and commissioned to be an apostle, not only Hood. Come on, Nagaland! Give your best shout! Hood. Hey, 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 hey. For the last song, Nagaland, give a shout of victory! Over to you, Apostle. My dear family, मेरे प्रिय परिवार, it's such a privilege to stand here as an ambassador of Christ. ये बहुत बड़ा सौभाग्य है यहाँ खड़ा होना मसीह के राजदूत के रूप में। Do we have the Nagamese? बेसी खुशी আছে মহিলারা মরম পরিবার কাম I know that many of you for generations have carried wounds. मैं जानता हूँ आप में से कई लोग पीढ़ियों से घाव लेकर चल रहे हैं। মিলাগা মন দে দুঃখ লাগি কিনা চোট লাগি কিনা আছে Wounds that have been वो घाव जो गलत फहमियों के कारण हुए हैं, বুঝা লাগা দুঃখ mistreatment, गलत व्यवहार के कारण, ঠিক পুরা ইলাজ নকরা লাগা দুঃখ and the way people from mainland India have related to you. और जिस तरह से भारत के बाकी जगहों से लोगों ने आपके साथ रिश्ता रखने का या व्यवहार करने का And I प्रयास stand here as a representative किया। और and I ask forgiveness मैं एक प्रतिनिधि बनकर यहाँ खड़ा होकर क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, उन सब की तरफ से, মেইনলি ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট না আপনি কা লাগা মাফ মাগে আছে from all my people. And I want to say, we are sorry. मेरे सब लोगों की ओर से कहना चाहता हूँ हम आपसे माफी मांगते हैं। সব লাগা নাম পুরা আপনি কানকে মাফ মাগে আছে Please forgive us. हमें क्षमा कर दें, মাগে মাফ করে দিন Please forgive us for the things we have said हमें क्षमा करें उन चीज़ों के लिए जो हमने कही हैं, মাফ করে দিন that have made you feel less valued. वो चीज़ें जिन्होंने आपको आपकी कीमत को कम बताने की कोशिश की है, आपकी कीमत को कम Less ठहराया, honored and less seen. कम आदर के योग्य या कम दिखाई दिया, आपको महसूस करवाया। I just want to say today that in Christ we are one family. मैं मसीह में कहना चाहता हूँ कि हम सब मसीह में एक परिवार हैं, एकता परिवार আছে We are one body. हम एक देह हैं, We are washed with the same blood. हम एक ही लहू से धोए गए हैं, আমিগান সাবা করিছে We have the same heavenly Father. हमारा एक ही स्वर्गीय पिता है। एकता আছে Honor my family in Nagaland. इसलिए आज मैं नागालैंड में हमारे परिवार का आदर करना चाहता हूँ। মন আছে When one part is honored, जब the एक entire भाग body is का आदर, honored. जब एक भाग का आदर हो, पूरी देह का आदर होता है। পুরা খাওয়া অনার করার বিজনেস Today I want to honor you, my family in Nagaland, आज मैं आपका आदर करना चाहता हूँ हमारे नागालैंड for परिवार, your faith and for your resilience, आपके विश्वास और आपके संयम के लिए, for your love for Jesus and for your worship, यीशु के प्रति आपके प्रेम और आपकी आराधना के लिए, for your sacrifice, आपके बलिदानों के लिए, নিজকে ভাবনা নকরি কিনা মানো কালে ভাবনা করা নিবে for the spirit that never gave up. वो आत्मा जिसने कभी हार नहीं मानी। The church in India भारत देश की कलीसिया ইন্ডিয়া লাগা চার্চ is richer because of you. वो आप लोगों के कारण धनवान है। একদম ধনী হতো আপনি কান নিমিলে আছে
The church in India is stronger because of you. भारत की कलीसिया बलवान है आपके कारण Takot ho do apnikan nimide ase. And the Lord wants to break every wall of division that divides us. और परमेश्वर हर एक दीवार जो हमें विभाजित करती है उसको तोड़ना चाहता है. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that we will not enter 2026 with any hurt and offense in our heart. कि 2026 में हम किसी भी दर्द या किसी भी घाव के साथ प्रवेश ना करें अपने दिल में. I want to tell you that India loves Nagaland. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश नागालैंड से प्यार करता है. We love Nagaland. हम And we are so Nagaland se pyar proud karte hain. because of each one of you. You know, when I had to come for this meeting, the Lord kept putting this in my heart, and I have to do it today. जब मैं यहाँ आ रहा था इस मीटिंग में तो प्रभु मेरे दिल में डालता रहा और मुझे आज ये करना है. I would request Pastor Vabang, if one person which represents every tribe, if we can have a person which represents every tribe. मैं पास्टर वबांग से दरख्वास्त करता हूँ Hello. कि हर एक नागा गोत्र से एक जन को, एक प्रतिनिधि को लेंगे. I would like to request Reverend Saika Shohe. Reverend Saika Shohe. Reverend Lima. Reverend Lima Sanktam. Mr. Yaunki. Asole Ziliang. And I would like to request one representative from our tribe to please come forward. One representative from Angami tribe. One representative from Chakasang. One representative from Chang. One representative from Kumangan. One representative from Kuki. One representative from Konyak. One representative from Kachari. One representative from Lotha. One representative from Phom. One representative from Pochuri. One representative from Tikhir. Kungun hulibe ahibide. Itu tribe mata to ekta ekta hibe. Kungun hulibe dangor hube chito hube ekta ekta representative. If you are Tikhir manu ekta thakile to ahibi. Naomi Kepen, please send your representative from Rengma tribe. Our tribe, our Manu Kunba Thagile, Tikhir is Angami here. Manu, Chang Manu, Kumangan tribe, Kuki, Konyak, Kachari, Lotha, Phom, Puchuri, Rengma, and Tikhir. Union kumba laga president thakile to ahibide. So manu amengan ki tribe ase jani kina se represent kurble ahibi. Action. Sop laga tribe thakibude ete Nagaland laga tribe. Phom. Rongmai.
Kachari. Puchui. Chang. Chang. Konyak. Here. আৰু কোন লগা ট্ৰাইব মিচিং আছে আহিবি দে Kamyungan. কেমংগান Ao tribe. Rongmai. Karbi. কাৰ্বি সুমি কাম $160. Any other tribe? Chakisang. Any other tribe? Angami. Angami. Ao. Yeah. All right. Ao. Cookie is here. Yeah. So all the tribe is here, right? You may be seated. Please be seated. So all the tribe are represented. As an ambassador of gospel, सुसमाचार का एक राजदूत होने के नाते I want to talk to my family in Nagaland. मैं नागालैंड के अपने परिवार से बात करना चाहता हूँ. I'm telling you what God is doing here is so beautiful. Nagaland will never be the same again. मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर जो यहाँ कर रहा है वो इतना खूबसूरत है कि नागालैंड कभी पहले जैसा ना रहेगा. Yes, I know you have different tribes. हाँ मैं जानता हूँ आप अलग अलग गोत्रों से हैं And that's the strength of Nagaland, the diversity. और यही बल है नागालैंड का जो इतनी डाइवर्सिटी है. But I have come as a messenger of God to tell you that in Christ Jesus, we all are one family. लेकिन मैं मसीह का राजदूत होने के नाते आपको ये संदेश देने आया हूँ कि हम सब मसीह में एक परिवार और कोई बात हमें विभाजित नहीं कर सकती. All the tribes, all the beautiful tribes of Nagaland, when they come together, they become the tribe of Judah. नागालैंड की सारी खूबसूरत गोत्र जब एक साथ मिलते हैं तो वो यहूदा का गोत्र बनते हैं. And I just want to say that we honor every tribe. और हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर एक गोत्र का आदर करते हैं. Okay. Tangul. Any representative from Tangul? Any representative from Mao? Please come. Pomai. Please come. Tangul. Mao tribe. Pomai. Please come, yeah. Any other tribe missed out? If you have missed out any tribe, will you please come? Anal, yes. We also have a lot of Nepali in Nagaland. You are indigenous. Please, if there's any Nepali. Yeah.
One more chair. Something is happening tonight. There's a shift that is happening tonight. There is healing that is taking place. चंगाई हो रही है, There is एक बदलाव हो रहा है। restoration that is taking place. रिश्तों को वापस जोड़ा There जा is रहा है। reconciliation that is taking place. रिश्ते वापस जुड़ रहे हैं। The Lord is at work. परमेश्वर Come काम on, कर रहा है। everybody, stretch your hands towards the stage. हर कोई अपने हाथों को बढ़ाए। Let's thank God for this healing. 지수 그리스도 것이 아버니 라자 이스라엘가 라자리 당걸 홈잘리도 아버니 nomrata 호비 아게 আজি আপুনি কি দেখি আছে এইটো একটা নম্ৰতা হ লগা একটা সাইন একটা আছে आज रात नम्रता का एक लेसन सीख रहे हैं। ঈশ্বৰ লগা ৰাজা দে राज्य में ऊपर उठने ওপৰ का যাবলৈ तरीका, মন नीचे জানিতো झुककर। আমি খান নিচে আগে যাব লাগে আমি খান লিডারশিপ তো हमारी একটা क्या পজিশন पोजीशन নহয় है वो नहीं, হলিবি लेकिन हमारा दिल सेवा একজন करने का একজনকে है, সার্ভ वो मायने কৰাটো रखता আছে है। एक আমি सेवक খান
servant leadership जब लीडर बनता है নম্রতা तो वो করে राज्य কিনা की सही লিড अगुवाई করা তো करता এটা है। কিংডম কালচার দিয়ে আছে। हम सिर्फ আমি शब्दों से খালি नहीं सिखाते মুখ लेकिन বা हमारी কোয়াহি जिंदगियां নয়, বলবি उदाहरण আমি देती কান हैं। অ্যাকশন বা ডেমনস্ট্রেট করে। वचन देखो कि ना से दाई राजा हुई भी दाई दाई लगा किंगडम छाड़ेगी ना अमीगान लगा मौजूदे आईशे और दाई नम्रता होगी ना एक दाई सर्वेंट ना उसने स्वर्ग की महिमा छोड़कर एक दास का रूप धारण किया। दाई निचोर नीचे होगी ना मृत्यु तक अपने आप को नम्र कर रखा। Because he was obedient and humble to the will of God, God lifted Jesus up. और क्योंकि वो आज्ञाकारी था और परमेश्वर के अधीन समर्पित रहा, परमेश्वर ने यीशु को ऊंचा उठाया। God lifted him up and gave him the name that is above every name. परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया और ऐसा नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। And seated him at the right side of the Father. और उसको पिता के दाहिने हाथ बैठा दिया, So that one day every knee will bow before him. ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाए। And every tongue confess that Jesus Christ is Lord. और हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। Jesus Christ is Lord. यीशु ही प्रभु है। Jesus Christ is Lord. यीशु मसीह प्रभु है। Jesus is Lord of Nagaland. यीशु मसीह नागालैंड का प्रभु है। Jesus is Lord of Assam. यीशु मसीह आसाम का प्रभु है। Jesus is Lord of Nepal. यीशु मसीह नेपाल का राजा है। Jesus is Lord of Manipur. सारे मणिपुर का प्रभु है यीशु। Jesus is Lord of Bhutan. यीशु भूटान का प्रभु है। Jesus is Lord of India and the nations. यीशु भारत देश और देशों का प्रभु King है। of kings and Lord of lords. वो प्रभुओं का प्रभु है, Because he was humble क्योंकि वो नम्र हुआ, and because he was obedient to God. वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहा। In the kingdom, the way up is the way down. राज्य में ऊपर उठने का तरीका नीचे झुक कर है। It is written, if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. ये लिखा है, जो कोई परमेश्वर के राज्य में महान है वो एक दास होना सीखे। What you're seeing tonight is a demonstration of servant leadership. आप जो देख रहे हैं आज रात, वो एक सेवक जब अगवा होता है उसका उदाहरण आदर्श है। Jesus said, these things that I have spoken to you यीशु ने कहा, ये is so बातें मैंने that तुमसे my कही हैं joy will remain in you and that your joy may be full. ताकि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। Follow me and I will make you fishers of men. मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा।
You know, to follow Jesus is to love people. यीशु के पीछे चलने का मतलब है लोगों से प्यार करना. To follow Jesus is not to look for position or recognition or status. यीशु के पीछे चलने का मतलब अपने लिए कोई ओहदा ढूंढना या कोई To पहचान follow Jesus ढूंढना नहीं is है. to connect with people, to love people. यीशु के पीछे चलने का मतलब लोगों से रिश्ता बनाना, लोगों की परवाह करना. To follow Jesus is to be concerned about the lost souls. यीशु के पीछे चलने का मतलब है जो खोए हुए हैं उनकी चिंता करना. To follow Jesus means to serve God's people. यीशु के पीछे चलने का मतलब है परमेश्वर के लोगों की सेवा करना. Servant leadership. एक सेवक अगुवा होना. When you honor God, you will honor God's people. जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो आप परमेश्वर के लोगों का भी आदर करते हैं. Honor and serving is kingdom culture. आदर करना और सेवा करना ये राज्य की संस्कृति है. Come on, can we make a commitment today क्या हम आज ये वादा कर that we सकते will हैं not allow devil to divide us anymore? कि हम शैतान को हमें बांटने की अनुमति नहीं देंगे. We are one family in Christ Jesus. हम मसीह यीशु में एक परिवार हैं. We belong to the same family. हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं. Amen. आमेन. Come on, can you lift up your hand and give a big praise to Jesus? अपने हाथ को उठाएं और प्रभु यीशु मसीह को एक बड़ी महिमा दें. I am telling you, a new India is rising up. मैं आपको बता रहा हूँ एक नया भारत This खड़ा हो nation रहा will है. not be divided anymore. ये देश और बटा नहीं रहेगा. We are one family. हम एक परिवार हैं. We are one family. हम एक परिवार हैं. We are one family. हम एक परिवार हैं. I pray that you would allow the Father to heal every wounds in your heart that you have carried for years. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पिता को सारे घाव चंगा करने देंगे जो आप सालों से अपने दिल में रखे हैं. I want to declare today that India loves Nagaland. आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि इंडिया नागालैंड से प्यार करता है. Jesus loves Nagaland. यीशु नागालैंड से प्यार करता है. Amen. 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 Hallelujah. I just want to thank you so much. हम आप सभी को I धन्यवाद just want देना to thank you so much. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.
Come on, church, lift up your hands. Come on, give the biggest praise. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद We पिता, just glorify your name, Lord. हम आपके नाम की Father, we महिमा just करते हैं। thank you. पिता हम धन्यवाद देते हैं Thank you for your presence in this place. आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद इस स्थान पर, Thank you for your love in this place flowing, आपके Lord. प्रेम के लिए धन्यवाद जो इस स्थान पर Thank है। you, Holy Spirit, for your presence, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। God, you are so good. परमेश्वर आप बहुत You are भले so हैं, good. आप बहुत भले हैं। And I just want to say that, as Apostle has said already, we love you so much, Nagaland. जैसा अपोस्टल जी ने कहा, नागालैंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। Thank you for loving us so much. धन्यवाद हमसे इतना प्यार करने के लिए। Thank you for standing for your faith. धन्यवाद अपने विश्वास में दृढ़ खड़े रहने के लिए। Standing here is a witness of your Jesus Christ. यहाँ पर खड़ा होना आपके प्रेम का सबूत है, आपके राजा यीशु के लिए। Amen. And God has just been putting this verse in my heart. That, और the परमेश्वर Bible says that the eyes of the Lord runs to and fro ये वचन मेरे दिल में डाल रहा था कि परमेश्वर की आंखें यहाँ वहाँ देख रही हैं, throughout the whole earth. पूरी पृथ्वी पर, You know, that He may show His power ताकि वो अपनी सामर्थ्य को to प्रकट them करे, whose hearts are loyal to Him. उनके द्वारा जिनके दिल उसके प्रति विश्वास योग्य है। And that's what Lord has been looking for. He's looking for those loyal hearts, the passionate hearts for Jesus. और ये है जो परमेश्वर तलाश रहा है, वो जलन से भरे प्रेम करने वाले दिल And I उसके know लिए। that we have so many youth here tonight. और मैं जानती हूँ बहुत सारे जवान लोग आज And I यहाँ just हैं। feel like the Spirit of the Lord is saying to all the youth, to the kids, the teenagers, that He is searching for those loyal hearts tonight. और मैं महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर कह रहा है वो विश्वास योग्य दिल आज वो ढूंढ रहा है जगह पर। Just come back to Him. उसके पास वापस आ जाएं, Just tell Him, Lord, I am for you. उससे कहें प्रभु मैं आपके लिए हूँ, I give my heart to you, मैं Lord. अपना दिल आपको देता हूँ प्रभु। Make me a passionate, laid down lover for you, Jesus. मुझे आपका दीवाना प्रेमी बनाओ यीशु, Because I'm telling you, a life lived for Jesus is a life worth living. क्योंकि यीशु के लिए जिया गया जीवन जीने योग्य जीवन है। When you see us here, जब आप हमें यहाँ देखते हो, you know, that's what the Lord can do in प्रभु your ये life. कर सकता है एक जीवन के द्वारा। He can turn around your life. वो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। He's just looking for loyal hearts. वो केवल विश्वास योग्य So दिलों को commit ढूंढता है। tonight that, Lord, I give my heart to you. तो आज रात ये ठान लो, मैं अपना दिल आपको देता हूँ प्रभु, Because His कि आपको तलाश रही है। Amen. Amen. I just bless you, Nagaland, नागालैंड में आपको with आशीष all देता my हूँ, heart. अपने पूरे दिल से।
And our hearts are overwhelmed with the love that you have shown to us, और हमारे दिल the भर love गए that you हैं have उस प्रेम shown से, to your King, our Lord Jesus Christ. जो प्रेम आपने हमारी और अपने राजा यीशु को दिखाया। And I just speak the peace of our Lord Jesus Christ over Nagaland. और मैं प्रभु यीशु मसीह की वो शांति I नागल पे speak the बोलती unity in the Spirit हूँ। आत्मा में एकता की in घोषणा the करती name हूँ। of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु Let there मसीह के be नाम peace, let there be unity. कि शांति और एकता बनी रहे नागालैंड में हमेशा। As the Lord, as His will is in heaven, let it be on earth in Nagaland in Jesus' name. जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर नागालैंड May में the उसकी Lord इच्छा use पूरी you mightily for His glory. हो। परमेश्वर आपको महान रूप से अपनी महिमा के Amen. लिए I इस्तेमाल bless you. I bless you with all my heart. Amen. In Amen. Jesus' आपको mighty आशीष name. दे। यीशु के नाम। Amen. आमीन। Okay. It's time, the entire Nagaland, we're going to bless gatekeepers and Lighthouse Church. पूरा नागालैंड ये समय है कि हम गेट कीपर्स और लाइट Can you हाउस see a handful of people came together and look what is possible? What God did. इन लोगों को ब्लेस करें। आप देख सकते हैं मुट्ठी भर लोग इकट्ठे हुए। Come on, you can do better than that, Nagaland. Come on. देखो परमेश्वर ने Give क्या the किया best नागालैंड। praise you can to एक Jesus. महान स्तुति यीशु को दें। Tell your neighbor, this is just the beginning. अपने पड़ोसी से कहो ये केवल शुरुआत है। This is just the beginning. ये तो केवल शुरुआत है। Hallelujah. हालेलुया। And we are just gonna bless them. और हम उन्हें आशीष देंगे। Come on, stretch your hands. अपने हाथों को बढ़ाएं उनकी ओर। You will have like 1.5 lakh blessings coming your way. 1.5 लाख ब्लेसिंग आपकी ओर आ रही है इस समय। I don't know, maybe more today. We have शायद आज people ज़्यादा ही है। till the end here and here. पीछे भी लोग बैठे हैं। Father, we pray पिता हम for these प्रार्थना करते precious हैं people. इन कीमती लोगों के We लिए। pray that your hand of favor हम प्रार्थना करते हैं is resting upon them. We thank you, Father, that they are your beloved sons and daughters. आपका फेवर का हाथ इनके ऊपर आ रहा है। ये आपके Father, बेटे बेटी हैं। you have shown to entire Nagaland what is possible if people can only believe. पिता आपने पूरे नागालैंड को दिखाया क्या संभव है अगर लोग विश्वास करें तो। Only believe, Jesus, you said, यीशु आपने and कहा you will see the glory of God. विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। So, Father, we bless them. We bless पिता, their families. Lord, I pray, हम इन्हें ब्लेस as करते your servant, as your ambassador, I declare that, Lord, their generations will reap the harvest from this revival meeting, Lord. हैं। इनकी पीढ़ियां फसल काटेंगी इस बेदारी सभा Goodness से। and mercy shall follow them all the days of their life. करुणा और भलाई जिंदगी भर इनका Oh, पीछा करते रहेंगे। Father, till their last day, they will be gathering exploits आखिरी because दिन they तक dreamed for your kingdom, Lord. अपने जीवन के आखिरी दिन तक इसका We bless प्रतिफल them, पाएंगे। their ministries, their families. उनके परिवार और सेवकाई को ब्लेस करते हैं हम। In Jesus' name, यीशु के नाम में we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Amen. And I know many of you know that a girl fell yesterday, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक लड़की कल गिर गई थी। and I know many rumors were circulating. और मैं जानता हूँ बहुत सी अफवाहें फैल रही थी। So I went and met her in the hospital, and Grace is doing good. If the team can. मैं खुद गया और मैं उससे मिला अस्पताल में और ग्रेस अच्छी भली है।
So, yeah, you can see her picture. Grace is doing amazing, and we pray God will put devil to shame through Grace in Jesus' name. परमेश्वर शैतान को शर्मिंदा करेगा ग्रेस के जीवन के द्वारा यीशु के नाम में। Devil had planned to end her life. शैतान ने उसका जीवन खत्म But करना our चाहा God था। says in Psalm 91, लेकिन हमारा He will परमेश्वर give कहता है, His angels charge over us, and they will keep us in all our ways. भजन 91 में उसका वचन कहता है वो अपने स्वर्ग दूतों को हमारे निमित्त आदेश देता है कि वो हमारी रक्षा करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now अब it's the time for word. ये वचन का समय है। Is there anyone lover of God's word in this place? क्या यहाँ पर कोई है जो परमेश्वर के वचन से प्यार If करता है? you love God's word, come on, let me hear your loudest अगर आप उसके amen. वचन से प्यार करते हो मुझे आमेन सुनाई दे आपका। Amen. Hallelujah. You know the Lord is doing amazing miracles. आप जानते हैं प्रभु अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं। I know my Naga family, you guys are very shy, you don't come forward. मैं जानता हूँ मेरे नागा परिवार आप लोग बहुत And शर्म later खाते we are हैं। getting news of so many people getting healed, but they say, oh, we feel shy, we don't want to come in front. आगे नहीं आते गवाही देने के लिए कि शर्म लगती है, लेकिन बहुत सी गवाही हमारे पास आ रही है। Among all the healings that have happened, one has really touched my heart, and I want to tell you, सारी चंगाइयाँ जो हुई हैं उनमें से एक ने मेरे दिल को बहुत छुआ। मैं there आपको is बताना चाहता an auntie in the ambulance, हूँ। एक आंटी एम्बुलेंस में आई and थी she had a food pipe, her body was not functioning, और उनको फूड पाइप लगा हुआ था, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, and she could not speak. वो बोल नहीं सकती थी। I think the team has a video, and we prayed for her. टीम के पास वीडियो है, हमने उनके लिए प्रार्थना किया। Okay, let's see that. इस वीडियो को देखते हैं। Tell her to believe that the healing will start now. 이거 마찬가지 빌레 이테나 오 모딜라 끔스가 아사 빌링이 아고 이나로 뱅게 It will start now. Okay? 아고 빌리시로 뱅게 And 예 yeah, just tell her to close. 안티 본치네 Father, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, Thank you Jesus Thank you Father, in Jesus, let your resurrection power flow in her body, Lord. Thank you Jesus From the crown of her head to the soles of her feet, Lord. Right now, Yes Lord I curse this stroke right now. I command her body to be healed right now. Okay, I think we just got to know from media. The video that we showed you of the ambulance is of some other woman. The team, I think there is some confusion. So we'll show you a different her video from the ambulance. जो एम्बुलेंस का वीडियो There देखा is वो some confusion. किसी और के लिए प्रार्थना किया था। मैं Okay, आपको I इनका think there वीडियो were दिखा रहा हूँ multiple ambulance ambulances, so she was in a different का। ambulance. बहुत This सारी lady. एम्बुलेंसेस थी और वो एक अलग एम्बुलेंस में थी। Team, if you can find that video of that ambulance. Okay, hallelujah. But we know one thing, Jesus is the healer. लेकिन एक बात And पता this है lady came in an कि ambulance यीशु and got चंगा healed. करता है। ये When एम्बुलेंस the में team थी, finds it, you know, they can just. प्रभु ने उनको चंगा किया। Okay, her daughter is here. Can she come? Her daughter is here. Okay, this is the woman. This is that woman. Okay, so this was the woman. For integrity's sake, we wanted to tell you. खराई के कारण हम आपको बताना चाहते हैं। Okay. Now, Nagaland, are you ready to receive the word? अब नागालैंड क्या आप तैयार हैं वचन को ग्रहण करने के लिए?
Amen. Amen. This is the final day आज when we meet together, but the revival is not going to stop. आज वो अंतिम दिन है कि हम यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन ये बेदारी Because रुकने वाली remember what नहीं। I told you. याद रखना जो मैंने कहा था, We are going to draw a circle around us, हम अपने आसपास एक सर्कल बनाएंगे and we are going to have revival inside that circle. और बेदारी को उस घेरे के अंदर लेकर चलेंगे And साथ। wherever we will go, we will take the revival with और us. जहाँ कहीं जाएंगे वो बेदारी को साथ So लेकर जाएंगे। revival is not just in this state auditorium. The revival will go back in your homes. The revival will go to your offices. तो बेदारी केवल इस स्टेडियम में नहीं, पर आपके घरों में, आपके दफ्तरों में भी जाएगी आपके साथ साथ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं? I think one more thing God wants to break in the culture of Nagaland is the culture. और चीज जो परमेश्वर नागालैंड की संस्कृति से तोड़ना चाहता है वो है शर्म की संस्कृति या शर्म आना। Come on, you are children of the King. The Bible says righteous आप उस- are bold as lions. आप उस राजा की संतान हो, बाइबल कहती है धर्मी जन शेरों की तरह साहसी होंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. I pray for the spirit of boldness to come upon you मैं tonight. साहस की आत्मा आप पर आए, ये प्रार्थना करता हूं आज। Remember I told you that many giant slayers are rising from this land. याद है मैंने कहा था बहुत दानवों को मार गिराने वाले उठ खड़े हो रहे हैं इस जगह से। You know, I have read in so many places where people say that when God had to make David a king, he brought a Goliath before him. मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि जब परमेश्वर को दाऊद को राजा बनाना था तो वो एक गोलायत लेके आया उसके सामने। But that's not true. लेकिन ये सच नहीं है। God didn't put Goliath before David. God put Goliath before the entire nation of Israel. परमेश्वर ने गोलायत को दाऊद के सामने नहीं रखा था, उसने पूरे इजराइल के सामने गोलायत को रखा था। It was David who chose to slay that giant. It was David who said, "Who is this uncircumcised Philistine?" Because he was bold in his covenant with his God. लेकिन वो दाऊद था जिसने चुना गोलायत को मार गिराना, जिसने कहा कौन है ये खतना रहित फलिस्ती, क्योंकि वो अपने Amen. परमेश्वर को जानता था। Come on, Nagaland, say this after me. नागालैंड मेरे साथ कहो, Father, पिता I receive the spirit of boldness. मैं वो साहस का आत्मा लेता हूँ। Father, पिता I receive the spirit of boldness. मैं साहस का आत्मा लेता हूँ। Father, पिता I receive the spirit of boldness. मैं साहस का आत्मा लेता हूँ। Amen. Hallelujah. I'm feeling little sad that this is the last day. थोड़ा दुख लग रहा है मुझे कि आज आखिरी दिन है। From tomorrow we'll go back. कल से हम वापस जाएंगे। But I think I have done for which my heavenly Father sent me here. पर मुझे लगता है मैंने वो कर दिया जिसके लिए मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे यहाँ भेजा था। And I'm telling you, और मैं आपसे बता रहा हूँ, next year when we come back, अगले साल जब हम वापस आएंगे, oh hallelujah, we are going to see a mighty generation of victorious champions in Nagaland. जयवंत योद्धाओं की एक महान पीढ़ी को उठा हुआ देखेंगे हम नागालैंड में। If you believe it, come on, shout aloud, अगर amen. आप मानते हो तो जोर से आमेन कहो। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। You know, when I got saved, I asked God this question. जब मैंने उद्धार पाया, मैंने परमेश्वर से सवाल किया, What is Christianity? मसीहत क्या है? Because the Christianity that we know today, क्योंकि जो मसीहत हम आज जानते हैं, it has been
limited to a mere religion. तो वो एक साधारण धर्म तक सीमित हो गई है. So I asked the Lord, what is true? What is true Christianity? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु सच्ची मसीहत क्या है? And this is what he told me. और उसने मुझसे ये उत्तर दिया. He said, उसने the कहा, union of God and man is Christianity. परमेश्वर का और मनुष्य का एक हो जाना ही मसीहत है. The union of God and man. You are not alone now. आप अकेले नहीं हो अब. You have been joined together with Christ Jesus for eternity. अब आपको मसीह यीशु के साथ अनंत तक के लिए एक कर दिया गया है. Apostle Paul says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me and Christ lives through me. पौलुस प्रेरित कहते हैं, अब मुझ में मैं ना रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन अब मुझ में मसीह जीवित है और वो मसीह मेरे द्वारा जीता है. Amen. आमीन. So the issue of God is not our ministry. तो परमेश्वर की जो समस्या है वो The हमारी issue सेवकाई of नहीं God है. is not our ministry. Not our activity. हम क्या कर रहे हैं उसके Not our दिक्कत नहीं. service. हमारी सेवा भी नहीं. It is the measure of our union with Him. परमेश्वर के लिए मुद्दा है हमारा उसके साथ एक हो जाना. The more you know that you are one with Him, the more God's power will flow through you. जितना ज्यादा आपको ये पता होगा कि आप उसके साथ एक हो चुके हो, उतना ज्यादा उसका सामर्थ्य आपके जीवन के द्वारा The काम more करेगा. you know that you are in union with Him, you are one with Christ, sin will have no power over you. जितना ज्यादा आपको पता होगा कि आप उसके साथ एक हो चुके हैं, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा. If you and Him are united, अगर आप और वो एक हो चुके and हैं, if you put a cigarette in, if you take a cigarette and touch your lips with it, you are touching the lips of Jesus. अगर आप एक सिगरेट को लेकर अपने होठों पर रखते हैं तो आप यीशु के होठों पर वो रख रहे हैं, Because you are living in one union with Jesus. क्योंकि आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं. Amen. आमीन. Today, I had told you I'm going to talk about healing, and I want to teach you आज मैंने आपसे कहा था मैं आपसे चंगाई के बारे में बात करूंगा, सिखाऊंगा, because healing is the heartbeat of the gospel. क्योंकि चंगाई ही सुसमाचार की धड़कन है. The topic of healing is often misunderstood. चंगाई के विषय को अक्सर गलत समझ लिया जाता है. Many people downplay its significance. कई लोग उसके महत्व को कम आंकते हैं या छोटा समझते हैं. In Matthew 22:29, Jesus answered and said to them, You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. मत्ती 22:29 में यीशु कहते हैं कि तुम ना तो परमेश्वर के वचन को जानते हो, ना ही उसकी The सामर्थ्य people को who जानते say that God doesn't heal anymore, हो. जो लोग कहते हैं परमेश्वर अब चंगा नहीं करता, they are mistaken. वो भूल में है या Not गलती knowing में. the scriptures nor the power of God. ना तो उनको वचन पता है, ना परमेश्वर की सामर्थ्य पता है. My God has not changed. मेरा परमेश्वर बदला नहीं है. My God has not changed. मेरा परमेश्वर बदला नहीं है. The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है. He was a healer 2000 years ago and he is a healer today. वो 2000 साल पहले भी चंगा करता था और आज भी चंगा करता है. Amen. You know, one of the very first names that God revealed to mankind was Jehovah Rapha. अपने नामों में से जो सबसे पहला नाम परमेश्वर ने बताया अपने बारे में वो था यहोवा राफा. The Lord our healer. यह परमेश्वर हमारा चंगा करता. That's one of his name. वो उसका नाम है. If you met me in the market अगर आप मुझे बाजार में मिले and you called me by my name और आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया and I have changed my name, I said no, that's not my name now. That was my name 5 years ago, but now I don't have the same name. और मैं कहूँ नहीं अब ये मेरा नाम नहीं है, 5 साल पहले था ये मेरा नाम, अब ये मेरा नाम नहीं है. What would you think about my character? तो आप मेरे चरित्र के बारे में क्या सोचोगे? No. नहीं.
God has not changed his name. तो परमेश्वर ने भी अपना नाम नहीं बदला His है. name was Jehovah Rapha. उसका नाम His यहोवा name राफा था. is Jehovah Rapha. उसका नाम Our आज भी है. God is the healer. यहोवा राफा, हमारा परमेश्वर हमारा चंगा करता है. I know so many people say today, don't go to God don't go to God for healing. Yes, that's true. We go to God first. You get born again, you get saved. But hear this. मैं जानता हूँ लोग कहते हैं कि परमेश्वर के पास चंगाई के लिए मत जाओ. हाँ, हम जानते हैं उसके पास हम जाते हैं, उद्धार पाते हैं. Did you ever read that in the Bible? Ever? That Jesus pushed people away saying, don't come to me for healing. क्या आपने बाइबल में कभी पढ़ा कि यीशु ने लोगों को दूर धकेल दिया बोल के कि मेरे पास चंगाई के लिए मत आओ? And I'm going to teach you something from the word. और मैं आपको वचन से कुछ सिखाना चाहता हूँ, so that you understand it's your father's heart. ताकि आप समझें कि ये आपके पिता का दिल है. So I want to respond to some arguments that मैं people have. कुछ तर्क जो लोग देते हैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ. First argument is, पहला तर्क है healing is not as important as salvation. कि चंगाई उद्धार जितनी महत्वपूर्ण नहीं है. Okay, that's the first argument. Healing is not as important as salvation, so we should not emphasize it. ये पहला तर्क है कि चंगाई उद्धार जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको इतना महत्व मत दो. What they don't understand is जो ये लोग नहीं समझते हैं that the Greek word sozo contains both meaning forgiveness of sins and healing of our कि bodies. उद्धार का जो यूनानी शब्द है सोजो, उसमें दोनों बचाया जाना और पापों की क्षमा यानी कि और चंगाई दोनों है. If you study the word sozo means to save, heal, deliver and preserve. अगर आप सोजो शब्द पढ़ेंगे तो उसका मतलब है बचाना, चंगा करना, छुटकारा देना, सुरक्षित रखना. In Romans 10:9, when Bible says, if you believe in your heart and confess with your mouth Lord Jesus, you shall be saved, the word there is sozo. रोमी 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, तो तू बचाया जाएगा. और वो जो उद्धार पाएगा शब्द है वो सोजो शब्द है. But in Mark 5:34, when that woman with the issue of blood got healed, Jesus said, daughter, your faith has, Bible says, healed you. But Jesus did not say your faith has healed you. The Bible says your faith, Jesus said your faith has sozoed you. It's the same word that Jesus used. So the same word used for the forgiveness of sins is the same word used for the healing of bodies. मरकुस 5:34 में जब उस स्त्री से यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तो उसने चंगा नहीं कहा था, असल में उसने सोजो कहा था. जो शब्द पापों की क्षमा के लिए, बचाए जाने के लिए था, वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है. Luke 17:19 says, लूका 17:19, Jesus told the leper, your faith has sozoed you. यीशु ने कोढ़ी से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे सोजो किया है. Sozoed you. तेरे विश्वास ने तुझे सोजो किया है. See, the problem with many Christians is a बहुत से- lot of self-righteousness. बहुत से मसीहों की दिक्कत यह है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी समझते हैं, या अपनी नजरों में अपने आप को धर्मी They देखते हैं. want to make you feel guilty. Why are you going to your father for healing? Tell me one thing. If you will not go to your father, where will you go? और वो आप में दोष लगाना चाहते हैं कि अपने पिता के पास चंगाई के लिए मत जाओ. मुझे एक बात बताओ, अपने पिता के पास नहीं तो किसके पास जाओगे? Is it a wrong thing when you go to your father believing what he has promised you? क्या ये गलत बात है अपने पिता के पास जाना विश्वास करते हुए जो उसने आपसे वादा किया है? He made you the promise before you were born. उसी ने तो आपसे वादा किया था आपके पैदा होने से भी पहले. What does Psalm 103 says? भजन 103 क्या कहता है? Let me read it and I want you to hear carefully. मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा. Bless the Lord, O my soul, यहोवा को धन्य कहे मेरे मन, and forget not all his benefits. और उसके किसी उपकार को ना भूलना. So God does not want you to forget his benefits. And this word benefit is the Hebrew word gamal, which means his goodness. Do not forget his goodness. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके उपकारों को भूलें. और ये जो उपकार शब्द है गमाल, यानी कि उसकी भलाई को आप ना भूलें, परमेश्वर चाहता है. Okay? Forget not all his benefits.
उसके उपकारों को ना भूलना। What are the benefits? क्या उपकार है उसके? What is His goodness? क्या है उसकी भलाई आपके लिए? First, पहला, He forgives all your iniquities. वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। And after that, और उसके बाद full stop. बात खत्म, Right? है ना? ऐसा ही लिखा है। Because God is only concerned क्योंकि that you will be saved. परमेश्वर को तो बस इतनी चिंता है कि आप बचाए जाओ बस। So bless the Lord प्रभु who forgives all your iniquities. यहोवा को धन्य कहो, वो तो तुम्हारे सारे अधर्म क्षमा करता है। Full stop. बात No. खत्म नहीं। Religion, hear this. सुनिए, Religion has put full stop where God has put a comma. धर्म ने वहां पर फुल स्टॉप लगा दिया है जहां पर परमेश्वर ने कॉमा लगाया था। I said religion has put a full stop where God has put a comma. मैं कह रहा हूं धर्म ने वहां पर फुल स्टॉप लगा दिया जहां पर परमेश्वर ने कॉमा लगाया था। He forgives all your iniquities. वो तुम्हारे सब अधर्मों को क्षमा करता है। He heals all your और diseases. तुम्हारे सब रोगों को चंगा करता है। Do you believe the written word? क्या आप लिखित वचन को सच मानते हो? Who heals all your diseases. जो आपके सब रोगों को चंगा करता है, Who redeems your life from destruction. जो तुम्हारे प्राण को नाश होने से बचा लेता Who है, crowns you with loving kindness जो तुम्हारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है and tender mercies. और दया उंडेलता है, Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. जो तुम्हारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ताकि तुम्हारी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाए। Tell your neighbor, do not forget all his benefits. अपने पड़ोसी से कहो उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। What are his benefits? क्या है उसके उपकार? He forgives all your sins. वो आपके सब अधर्म क्षमा करता है। He forgives all your sins. वो आपके सब अधर्म क्षमा करता है। If you come to Jesus the Savior, He forgives all your sins. अगर आप यीशु के पास आते हो वो आपका उद्धार करता, आपके सभी पाप But क्षमा करता Jesus है। the Savior is also Jesus the Healer. पर यीशु उद्धार करता, यीशु चंगा करता भी है। He is Jehovah Rapha, my God who heals. वो यहोवा राफा है, मेरा परमेश्वर जो चंगा करता है। And He heals all our वो diseases. हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। Amen. आमीन। So you have to understand. तो आपको समझना है, When Bible says the word saved, जब बाइबल बचाया गया it's बोलती है, not just forgiveness of वो sins. सिर्फ पापों की क्षमा की बात नहीं कर रही है। Healing is included in sozo. चंगाई सोजो में शामिल है। Healing is included in sozo. चंगाई सोजो में शामिल है। Let me tell you a story. मैं कहानी One बताता हूं। time there was a famine in South Africa. एक बार साउथ अफ्रीका में अकाल पड़ गया। So one family decided to move to a different country. तो एक परिवार ने ठाना कि वो एक दूसरे देश में जाएंगे। So the father sold everything that he had and he got little money to buy 6 tickets in a ship to go to another country. तो पिता ने अपना सब कुछ बेच दिया और उससे जितना पैसा मिला उससे वो 6 टिकट खरीद पाया कि वो शिप जहाज में बैठ के दूसरे देश जाए। And it was a 3-day journey. 3 दिन की यात्रा थी And they got the ticket. और उनको वो टिकट They मिल गया। sat in the ship, वो जहाज में बैठ गए, but they had no money left. लेकिन अब उनके पास और कोई पैसा नहीं बचा And था। now it was time और अब समय था for food, कि खाना खाएंगे। for lunch. लंच का टाइम हो गया And the kids were hungry. और बच्चों को भूख लगी थी। And they said, Daddy, we are hungry. उन्होंने कहा पापा हमें भूख लगी But है। the father said, पिता ने कहा we don't have money. हमारे पास पैसा नहीं, Just wait for 2 more days. 2 और दिन के लिए रुक जाओ। When बस। we reach to the shore, I'm going to find a job and I'm going to give you food. जब हम उस पार चले जाएंगे मैं नौकरी ढूंढूंगा और तुम्हें खाना दूंगा। And then dinner time came. फिर डिनर का टाइम हुआ।
The kids are saying, Daddy, we are hungry. बच्चे भूख से कराह रहे हैं, पापा And the भूख लग father रही है। is feeling so bad. पापा को इतना बुरा लग रहा And the था kids would stand on the deck and see other people eating food. और बच्चे बाहर खड़े होकर देखते लोग अंदर खाना खा रहे हैं And the father would say, just wait for 2 more days. और पिता कहता बस 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन की बात है। And like that, on the ऐसे- 3rd last day in the ship, जब शिप में आखिरी दिन था उनका, this man was walking on the deck and he met the captain of the ship. ये आदमी डेक पर चल रहा था और शिप का कप्तान उसे मिला And the captain said, और कप्तान ने कहा we never see you and your family in the supper time. कि आप और आपका परिवार अभी तक हमें खाने के समय में दिखे ही नहीं है। He said, sir, उसने कहा श्रीमान we had no money to buy food. हमारे पास खाना खरीदने का पैसा नहीं था, My kids are so hungry. मेरे बच्चे इतने भूखे They were हैं, crying for 2 nights. वो रो रहे हैं 2 रातों से, But I had no money to feed them. लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं था उनको खिलाने के He लिए। said, the captain said to him, oh foolish man, all the meals were included in your ticket. कैप्टन ने कहा मूर्ख व्यक्ति, सारे समय का भोजन तेरी टिकट में शामिल था। Jesus said, you shall know the truth and truth will set you यीशु free. ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। So many people they are ignorant of the truth. इतने सारे लोग अनजान हैं सत्य को लेकर। Saved, this term sozo is a complete package from God. It includes the forgiveness of sins, it includes your healing, it includes your deliverance, it includes your well-being. उद्धार जो सोजो शब्द है वो एक पूरा पैकेज है, उसमें पापों की क्षमा, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपको सुरक्षित रखना, सब कुछ शामिल है। Second argument, दूसरा तर्क, only come because churches or some ministries they emphasize healing. भीड़ सिर्फ इसलिए आती है कि कुछ चर्चेस चंगाई करते हैं, So they say as if healing is a wrong thing. तो वो ऐसा दर्शाते हैं जैसे चंगाई तो बड़ी बुरी बात है, बड़ी बुरी चीज है, Because they don't understand one thing. क्योंकि उनको एक बात समझ में नहीं आती। Healing is not the distraction from the gospel. Healing is the demonstration of the gospel. चंगाई सुसमाचार से भटकना नहीं है, चंगाई तो सुसमाचार का सबूत है, उसका प्रकटीकरण है। Okay? Do you want to know why big crowds were following Jesus? अब जानना चाहते हो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे क्यों आ रही थी? Let's see what the Bible says. Why were huge crowds following हम Jesus? देखते हैं बाइबल क्या कहती है कि बड़ी, John 6:2 says, यूहन्ना 6 उसके 2 में लिखा है, then a great multitude followed him तब एक बड़ी भीड़ उसके because पीछे they आने saw लगी, his signs which he performed on those who were diseased. क्योंकि जो आश्चर्य था उनको देखते हुए। Why were huge crowds following Jesus? बड़ी भीड़ यीशु के पीछे क्यों आ रही थी? Because he was healing the sick. क्योंकि वह बीमारों को चंगा कर रहा था। Healing. चंगाई, When Jesus was healing the sick, the crowds were coming, and then Jesus was preaching about the kingdom of God. जब यीशु लोगों को चंगा कर रहा था तो भीड़ की भीड़ आ रही थी और तब वो उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा था। Let's see the ministry of Jesus. हम यीशु की सेवकाई के बारे में देखते हैं। Jesus was not just teaching alone. यीशु खाली सिर्फ प्रचार नहीं कर रहा था। Let's see what Jesus was doing. Matthew chapter 4 verses 23 to 25. मत्ती 4:23 से 5 देखते हैं। And Jesus went about all Galilee, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, teaching in their synagogues, उनकी सभाओं में उपदेश करता preaching the gospel of the kingdom, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, and और say and. बोलो और, We have put a full stop where God has put and. हमने वहां पर फुल स्टॉप लगा दिया जहां पर परमेश्वर ने और लगाया था। Teaching in the synagogue, उनके आराधनालय में उपदेश करता, preaching the gospel, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, and और healing all kinds of sicknesses and all kind of disease among the people. लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा।
Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various disease and torments. तब सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो अलग प्रकार की बीमारियों से दुखी And those who were demon possessed, और जो दुष्टात्माओं के जकड़े हुए थे, epileptics, मिर्गी वालों को, paralytics, झोले के मारों and को, he healed them. और उसने उन सबको चंगा किया. And that Jesus is here. और वो यीशु आज यहाँ पर है. And today epileptics will be healed. और आज मिर्गी वाले Paralytics will be healed. लकवे वाले चंगे होंगे. All kind of sicknesses and diseases shall be हर healed. प्रकार के रोग और बीमारी चंगे होंगे आज. Because my Jesus has not changed. क्योंकि मेरा यीशु बदला नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Hear this. सुनिए. Because he was doing all this, क्योंकि वो ये सब कुछ कर रहा था, great multitudes followed him. महान भीड़ उसके पीछे होली. Great multitudes followed him भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली. because he was healing various disease, various torments. क्योंकि वो अलग अलग तरह की बीमारियां और दुष्टात्माओं के सतावों से लोगों को छुटकारा दे रहा था. Why are today we are not able to win this nation? क्यों आज हम इस देश को जीत नहीं पाए हैं? Because we have limited the gospel to mere nice preaching, cute sermons. क्योंकि हमने सुसमाचार को छोटा बना के सिर्फ अच्छे सुनाई देने वाले समाचार. Jesus wasn't preaching cute sermons. He was demonstrating the power of the kingdom. यीशु मसीह केवल क्यूट सरमन नहीं सुना रहा था, वो परमेश्वर के राज्य का सामर्थ प्रकट कर रहा था. And I believe God is about to raise many vessels of power from Nagaland. If you believe, rise up from your place right now and say, Lord, fill me with your power. I want to rise as a vessel of your glory, a vessel of your power. अगर आप मानते हो तो कहो, परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ से भर दे. मैं तेरी सामर्थ से भरा हुआ बर्तन बनना चाहता हूँ. यीशु, fill me with your power, मुझे अपनी Jesus. सामर्थ से भर दे. यीशु, I will go to the east. मैं जाऊंगा पूरब I की will go to तरफ. the west. मैं जाऊंगा I पश्चिम की will go to तरफ. the north. मैं जाऊंगा I उत्तर की will go to तरफ. the south. मैं जाऊंगा दक्षिण की तरफ. And I will demonstrate the power of the kingdom. और मैं राज्य का सामर्थ्य प्रकट करूंगा. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. People are fed up with hearing stories what happened 2000 years ago. They want to encounter a living God that can change lives now. वो लोग थक चुके हैं कहानियां कथाएं सुन के 2000 साल पहले क्या हुआ था. वो आज अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा. We don't preach about a dead Jesus. We preach about a resurrected Jesus. हम एक मरे हुए यीशु के बारे में कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवित यीशु का प्रचार करते हैं. You know, recently I was in Europe and the Lord spoke to me and He said, tell them हाल ही में मैं यूरोप में था और प्रभु ने कहा इनसे बोल दो that I am raising many vessels of power. कि मैं बहुत से सामर्थ्य के बर्तनों को उठा के खड़ा कर रहा हूं. Religion wants you to be satisfied with dry theology. धर्म चाहता है कि आप रूखे सूखे ज्ञान में खुश रहो. No. नहीं. Paul says the kingdom is not mere talking. The kingdom of God is the power of God. पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य खोखली बातें नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण है. Can you imagine what will happen, Nagaland, if every person here gets filled with the power of the Holy Spirit and starts to go to his school and college and shop and starts to demonstrate that Jesus is not a character from a storybook, but Jesus is the living God. क्या आप कल्पना कर सकते हैं नागालैंड क्या होगा अगर यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य से भर गया, अपने स्कूल अपने कॉलेज में जाके दिखाने लगा कि यीशु किसी कथा कहानी का पात्र नहीं, वो जीवित परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. The thing is, many believers are telling other people, believe in Jesus. And the Lord is telling them, first you believe in me. बहुत से लोग जाके दूसरों को कह रहे हैं कि यीशु पे विश्वास करो और
प्रभु उनसे कह रहे कि पहले तुम You मुझ need पे to विश्वास believe करो। in me first because पहले- you don't really believe in me. पहले तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा क्योंकि तुम सच में मुझ पे विश्वास नहीं करते हो। Do we really believe in the same Jesus that we read about in the Bible? क्या हम उसी यीशु पर विश्वास करते हैं जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं? Hallelujah. हालेलुया। How many people here wants to be used and you say, Lord, use my life to heal the sick? Lift up your hands. कितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर के जीवन को इस्तेमाल कर अपने हाथ को उठाएं? Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I pray that may become healing hands in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ कि ये उठे हुए हाथ चंगाई देने वाले हाथ बन जाएं Father, यीशु I के नाम में। pray that let your power flow through these hands to heal the sick, to heal the diseased, to heal the tormented, because we are living in a sick world, Lord, and you want to manifest. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हाथ बीमारों को, सताए हुओं को, दुष्ट आत्मा से परेशान लोगों को छुटकारा देने वाले हाथ बन जाएं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया I में जी want रहे you to हैं। look at your hand. Look at your hand. मैं चाहता हूँ अपने हाथ की ओर देखें आप, Look at your hand. अपने हाथ को देखें And say to yourself, और अब एक छुटकारा देने वाले के हाथ हैं। say it again. दोबारा These कहें, hands ये हाथ are the hands of a deliverer. एक छुटकारा देने वाले के हाथ हैं। If you desire it, अगर आप चाहत रखोगे it will happen through you. तो आपके द्वारा ऐसा होगा। It will happen through you. आपके द्वारा It ऐसा will होगा। happen through you. आपके द्वारा ऐसा Lord होगा। will open blind eyes through you. प्रभु अंधी आंखें Lord आपके will द्वारा open खोलेगा। deaf ears through you. प्रभु बहरे कान आपके Lord द्वारा खोलेगा। will heal the cancers through you. प्रभु कैंसर्स को आपके द्वारा चंगा Lord करेगा। will heal all kind of sicknesses through you. प्रभु सब तरह की बीमारियां आपके द्वारा चंगा करेगा। He isn't looking for few chosen frozen. He wants to move through his entire body. वो कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं, वो अपनी पूरी देह के द्वारा काम करना चाहता है। Hallelujah. A guy met me and he said, "Oh, so you are a healer." मैं किसी से मिला, उसने कहा अच्छा तो तुम चंगा करने वाले हो। If my okay. Would you say Jesus? If my Jesus was a healer, then so am I, because he said, "As the Father has sent me, so I sent you." अगर मेरा यीशु चंगा करने वाला था तो मैं भी हूँ, क्योंकि उसने कहा जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। And what is the problem with healer? और चंगा करने में दिक्कत क्या है? I am not a killer. मैं I am a healer. मैं मारने वाला तो नहीं हूँ, चंगा ही कर रहा हूँ। Amen. आमेन। If God heals people through your life, don't you think it's the greatest privilege if you can pray, you know? अगर परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को चंगा करता है, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा? You know, when I see some testimonies, जब मैं कुछ गवाहियां देखता हूँ, little kids who were dying, छोटे बच्चे जो मर रहे थे, doctors gave up, डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, then we prayed, फिर हमने प्रार्थना की and Jesus healed them. और यीशु ने उनको चंगा किया। And you can see the entire family gave their life to Jesus. और आप देखते हो पूरे परिवार ने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी। And when I see that, जब मैं ये देखता हूँ, I बताओ, said, Lord, मैं this कहता is the हूँ greatest privilege. प्रभु ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा। What can be a greater privilege than this? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है प्रभु? That Almighty God कि सर्वशक्तिमान, flowed through you वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके द्वारा and काम कर रहा है transformed a life. और किसी की जिंदगी को बदल रहा है। You know, in our church, अब a जानते few हैं, months back, हमारी there चर्च was में this girl, Mehak? Kanak. Okay. There's this girl, Kanak. She was 12 years old, deaf and dumb from her childhood. हमारे कलीसिया में एक बच्ची को The लेके team, आए, the team can find her कनक picture. in नाम video. से, जो 12 साल Deaf से and dumb from birth. जन्म से गूंगी और बहरी थी, 12 साल की। Cannot hear at all, cannot speak. कभी सुना नहीं था, कभी बोली नहीं थी।
And somebody told them that go to church because their God heals. और किसी ने उनसे कहा था चर्च जाओ क्योंकि उनका परमेश्वर चंगा करता है. Think about that. इसके बारे में सोचो. What a great honor, because they have tried everything, but they say then in the end go to church because their God heals. कितना बड़ा आदर है क्योंकि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और कह रहे Come on. हैं कि जाओ चर्च, वहां उनका परमेश्वर चंगा करता है. हालेलुया. No, not this Kanak. Oh, is this the same Kanak? Yeah, you can see her disability. That's the disability card. You can see that as she grew up, she completely, and then she came to the church and उसका डिसेबिलिटी कार्ड देख सकते हैं आप, देख सकते हैं वो बड़ी हुई ऐसे ही, और जब उसको and कलीसिया God बुलाए, opened her ears and opened her mouth, परमेश्वर ने उसके कानों को, उसके मुंह को खोल दिया. and then her father, they didn't know the Lord, और वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे. but then they came to the church लेकिन जब वो चर्च आए and her father is crying और उसके पापा रोने लग and गए, said, Jesus is Lord. कहते यीशु ही प्रभु Jesus है, is Lord. यीशु ही प्रभु है. He said, after 12 years, I heard my daughter say, Papa, I have given my life to Jesus उन्होंने and कहा- I will serve Jesus all my life. उन्होंने कहा 12 साल रुका, 12 साल बाद मेरी बेटी ने कहा पापा अब मैं यीशु को अपनी जिंदगी दूंगा, उसके लिए जीऊंगा जिंदगी भर. And they have a shop. So उनकी- this video became viral from our channel. उनकी दुकान है और ये जो वीडियो था people चैनल started to वायरल go हो to गया. their shop because they knew Kanak was deaf and dumb. So they went to this man's shop and said, is it real that your daughter has started to hear and speak? लोग उनकी दुकान पर जाने लगे वीडियो वायरल होने के बाद, क्या ये सच है कि तुम्हारी बेटी, वो जानते हैं उनकी बेटी बहरी गूंगी है, कि सच वो He's सुनने not a लगी? Christian guy. वो क्रिश्चियन नहीं है. He said, yes, उन्होंने कहा ये सच है, Kanak can hear now. अब कनक सुन सकती है, She can talk now. वो बात कर And सकती then है. these people say, can you also take us to church? We also want to go to this church. और अब वो लोग कहते हैं क्या हमें भी उस चर्च ले जाओगे, हम भी जाना चाहते हैं वहां पर. And now they will book a bus and they come from Meerut. और अब वो बस बुक करके मेरठ से आते हैं, That's like 80 kilometers away. जो 80 किलोमीटर है. What would happen क्या होगा if in our services, अगर हमारी सभाओं में oh, Jesus starts to move? ओ यीशु चलना और फिरना शुरू कर दे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Okay. So that's my third point. I want to tell you, healing draws people to Jesus, not away from Jesus. Amen. मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंगाई लोगों को यीशु के करीब लेके आती है, यीशु से दूर नहीं ले जाती. See, we have heard many religious teachings. हमने बहुत सी धार्मिक शिक्षाएं सीखी हैं, सुनी हैं. It's important that we judge a teaching through the word. महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षा को हम देखें. What does the word say? वचन क्या कहता है? Acts 9:35. When फिर तो क्या काम? Aeneas was healed, जब एनियस चंगा हुआ, all who dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Turned to the Lord. When they saw his healing, they turned to the Lord. जितने लोग लुदा और शारोन में रहते थे, वे सब उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे, प्रभु की ओर. Hallelujah. हालेलुया. When people see healing, they turn to the Lord, Bible says. जब लोग चंगाई देखते हैं तो वो प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं. Right? Healing was a major reason why so many crowds came to hear Jesus. चंगाई एक बहुत बड़ा कारण था कि भीड़ की भीड़ यीशु को सुनने के लिए आती थी. Healing is one of the great tools to reach people. है वो. When you remove healing the sick, casting out demons, the power of God, then you want to argue and get people saved. You want to win an argument and then get them saved, and nobody wants to get saved then. जब आप बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा को निकालना, परमेश्वर की सामर्थ्य को हटा दो बीच में से, तो अब सिर्फ बहसबाजी बचती है कि बहस करके किसी को हम लाएंगे. In Acts chapter 3 verses 6 to 9, we read about this lame man who used to stand at the beautiful gate. प्रेरितों के काम 3:6 से 9 में हम पढ़ते हैं, वो लंगड़ा व्यक्ति And जो Apostle Peter and John, they are going and they saw this lame man
सुंदर फाटक पे बैठता था और पतरस और And this यूहन्ना वहां lame से man जाते। gets healed. और ये लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो जाता है। And the healing of this lame man led 5,000 people to Jesus. और इस एक लंगड़े व्यक्ति के चंगे होने से 5,000 लोग यीशु को जीवन देते हैं। Amen. And do you know, आप when जानते the हैं? religious people got really angry. Today also religious people get angry when sick are healed. और धार्मिक लोग बड़े गुस्सा हो गए जो बीमार चंगा हुआ। आज भी धार्मिक लोग ही हैं जो गुस्सा होते हैं जब बीमार चंगे होते हैं। तो They'll say, what is the need for healing? Healing. Only preach the gospel. वो कहते What do you हैं, mean? चंगाई- You mean the dead gospel? वो कहते हैं चंगाई की क्या जरूरत है? सुसमाचार सुनाओ, मतलब कौन सा मरा हुआ सुसमाचार? Because the gospel that my Jesus has told us to preach, he said, go and heal the sick when you preach. क्योंकि जो सुसमाचार मेरे यीशु ने बोला सुनाने के लिए, उसने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो जब प्रचार करते हो। Jesus didn't send us to preach a dead gospel. Jesus has sent us to preach a gospel and demonstrate the power of the Holy Ghost. यीशु ने हमें मरा हुआ समाचार सुनाने के लिए नहीं, एक जीवित सुसमाचार सुनाने के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट करने के लिए भेजा है। Hallelujah. So they said, they are judging Peter and John because they healed a lame man. तो वो पीटर और यूहन्ना का न्याय कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक लंगड़े, जन्म से लंगड़े को चंगा कर दिया। Look what Peter and John said. और देखो पतरस और यूहन्ना क्या जवाब देते हैं। Acts chapter 4 verses 8 and 9. फिर तो काम 4, 8 और 9। Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भर करके कहा, rulers of the people and elders of Israel, इज़राइल के if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, healing is a good deed done to a helpless man. Healing is a good deed done to a helpless man. अगर आज हम इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है उसके कारण न्याय किए जाते हैं, चंगाई एक दुर्बल मनुष्य के साथ भलाई करना है, चंगाई एक दुर्बल मनुष्य के साथ अच्छा करना है। Many will say, बहुत only लोग कहेंगे, preach Christ. केवल मसीह का प्रचार करो। Okay. अच्छा। Let's see from the Bible what preaching Christ sounds like. तो देखते What हैं। preaching Christ looks like. बाइबल से देखते हैं मसीह का प्रचार करना कैसा सुनाई देता है, कैसा दिखता है। I'm not saying anything. It's in your Bible. मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारी बाइबल में भी लिखा है। Acts chapter 8 verses 5. फिर तो के काम 8, 5। And then we'll read 7 to 8. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. तब फिलिप सामरिया गया और मसीह का प्रचार उनको किया। What was Philip preaching? फिलिप क्या He प्रचार कर preached Christ to them. उसने उनको मसीह का प्रचार किया जा करके। Amen. But what does preaching Christ looks like? लेकिन मसीह का प्रचार करना दिखाई कैसा देता है? Now the Bible says, for unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed, and there was great joy in the city. और तब दुष्ट आत्माएं निकली, बीमार चंगे हुए, लकवे के रोगी चंगे हुए और बड़ा महान आनंद उस शहर में फैल गया। So today if you say you are preaching Christ, you should also see these things, because preaching Christ looks like people getting delivered, people getting set free, the power of God moving in that place. अगर आप आज मसीह का प्रचार करते हो, आप कहते हो आप मसीह का प्रचार करते हो, तो ये सब दिखाई देना चाहिए। लोग बीमारियों से आजाद हो, बंधनों से छुटकारा पाए। Amen. And the Bible says और बाइबल कहती है in verse 6, multitudes gave heed to Philip's preaching, seeing the miracles that he did. 6वीं आयत में लिखा है कि भीड़ की भीड़ ने फिलिप के प्रचार को सुना, वो चमत्कार देखकर जो वो They were दिखाता not था। just hearing वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, Philip preach a message, they were seeing the power of God in action. वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, फिलिप कुछ संदेश सुना रहा है, वो देख रहे थे जो परमेश्वर की सामर्थ वो प्रकट कर रहा था उसको भी। Hear this. सुनिए, The same power that forgives your sins is the same power that heals your bodies. जो सामर्थ्य आपके पापों को क्षमा करता है, वही सामर्थ्य आपके शरीरों को चंगा भी करता है। You know what we have done is we have compartmentalized things. Healing, हमने क्या किया है, चीजों को बांट दिया Deliverance. है, डब्बों में डाल दिया। ये चंगाई है, ये छुटकारा है।
Jesus never did that. यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया. Jesus never compartmentalized it, उसने put it कभी in a different box. डब्बों में नहीं डाला चीजों को. Jesus preached. यीशु ने प्रचार किया. Jesus healed. उसने चंगा किया. Jesus delivered people छुटकारा दिया लोगों को. as one ministry. एक सेवकाई के कारण, एक सेवकाई करते हुए. And he told us to do the same. और उसने हमें भी यही सब करने के He लिए बोला. said, go and preach the gospel उसने कहा जाओ सुसमाचार का प्रचार करो and heal the sick. और बीमारों को चंगा करो. Cast out demons. दुष्ट आत्मा को Cleanse निकालो. the lepers. रोगियों Raise को the शुद्ध dead. करो. मुर्दों को जिंदा करो. Matthew chapter 10 verses 7 to 8. See, this is Jesus giving us the commandment. मत्ती 10:7 से 8. ये यीशु मसीह है जो हमें आदेश And दिया. as you go preach. और चलते चलते What प्रचार did Jesus करो. tell you? As you go preach. यीशु ने कहा जब तुम जाते हो प्रचार करते हुए जाओ. As you go preach. जाते जाते प्रचार करो. Saying, कहते हुए the kingdom of heaven is at hand. कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. After that, उसके बाद heal the sick. बीमारों को चंगा करो. Heal the sick. बीमारों को चंगा करो. Cleanse the lepers. कोढ़ियों को शुद्ध करो. Raise the dead. मरे हुओं को जिलाओ. Cast out demons. दुष्ट आत्मा को निकालो. Freely you have received. तुमने सेंत में Freely पाया है. give. सेंत में दो. Can I tell you the truth? मैं आपको सच बताऊं. It takes courage to pray for the sick. साहस चाहिए होता है बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए. It takes courage to stand on God's word. साहस लगता है परमेश्वर के वचन पर खड़ा होने के लिए. So people who don't walk in God's power, they get offended when they see somebody walking in power. तो जो लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में नहीं चलते वो नाराज हो जाते हैं जब देखते हैं कोई और परमेश्वर की सामर्थ्य में चल रहा है. Let me tell you a story. One time there was a fox मैं एक कहानी बताता हूँ. And एक बार she was एक लोमड़ी playing- थी और वो खेल and रही her थी tail was cut. और उस लोमड़ी की पूंछ कट गई. So now तो she अब- went and saw that other foxes have beautiful tails, but my tail is cut. उसने देखा जंगल में सारी लोमड़ियों की पूंछ है लेकिन मेरी पूंछ कट गई. So she thought, what should I do? उसने कहा क्या करूं. So she went to every fox and tried to convince them, cut your tail. Tail is not good. Tail उसने- is not good. Cut your tail. उसने जाके सारी लोमड़ियों को पट्टी बढ़ाने की कोशिश की. अपनी पूंछ काटो. But the fox is पूंछ बेकार telling है. other foxes to cut the tail because her tail is cut. In the same way, there are people who say, God doesn't heal anymore. Yes, maybe not in your church, but in our church, He heals every Sunday. तो जो लोग जैसे लोमड़ी जाके कह रही है अपनी पूंछ काटो वैसे ही लोग कह रहे हैं परमेश्वर चंगा नहीं करता. हाँ तुम्हारी चर्च में नहीं करता लेकिन हमारी चर्च में करता है आज भी क्योंकि वो यीशु जिंदा है. If your tail is cut, don't convince us to cut our tail. अगर तुम्हारी पूंछ कटी हुई है तो हमें मत बोलो कि हम भी पूंछ काट No, लें. no, no. My नहीं, Jesus नहीं. is alive. मेरा यीशु जिंदा है. And then we show them these medically verified doctor's report of healing. और फिर हम उन्हें मेडिकली वेरीफाइड डॉक्टर की रिपोर्टें दिखाते हैं. And then they don't have anything else to say. और उनके पास तब कोई बहाना नहीं बचता. What will I say? अब क्या बोलूं. So then they say, oh, it's not from God, it's from devil. वो कहते हैं ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो शैतान की I तरफ was से. like, wow. मैं कहता हूँ वाह. So now God makes people sick and devil heals people. तो अब तुम What कह an रहे हो- amazing theology. तो अब तुम कह रहे हो परमेश्वर लोगों को बीमार करता है और शैतान लोगों को चंगा करता है. वाह वाह बहुत ही अच्छी बात कर रहे हो. Maybe God got so bored healing the sick, He said, okay, Satan, let's do one thing. Now you heal the sick, I will make them sick. तो अब परमेश्वर बोर हो गया है चंगा करके वो बीमारों को कह रहा है तुम वो शैतान से कह रहे हैं तुम लोगों को No, चंगा my करो, मैं बीमार Jesus was a healer. My Jesus is a healer. And my Jesus will always नहीं, be a नहीं, नहीं. healer. मेरा यीशु चंगा करता था, यीशु चंगा करता है और यीशु हमेशा चंगा करता रहेगा. Amen. Amen. If you preach or if you doubt what I'm saying, you're अगर most welcome to come to us. You personally 200 medically verified reports of doctors. Take it to the best doctors and get them checked. तो मैं आपको न्योता देता हूँ मेरे पास आओ. मैं आपको कम से कम 200 रिपोर्टें दूंगा डॉक्टर्स की. जाके जाओ 200, डॉक्टर के पास चेक 500, कराओ. I mean, like, come. 200 500 जितनी चाहिए आओ. See, you can say, I don't believe God heals. That's your personal choice.
आप कह सकते हो मैं नहीं मानता परमेश्वर चंगा But करता है, वो don't आपकी try to मर्जी है। convince the entire world that God doesn't heal, because my God heals. लेकिन पूरी दुनिया के पीछे मत भागो कि ये मानो कि परमेश्वर चंगा नहीं करता, क्योंकि मेरा परमेश्वर चंगा करता है। Hallelujah. हालेलुया। And not only he heals, और सिर्फ वो चंगा ही he नहीं करता, is right now healing people. वो अभी भी लोगों को चंगा कर रहा है इस जगह पर। I'm telling you, so many testimonies are going to come out of this revival. बहुत सी गवाहियां इस बेदारी इस रिवाइवल में But से hear आएंगी। this. सुनिए, You have not just come here to receive your healing. आप यहाँ सिर्फ अपनी चंगाई लेने नहीं आए हो। You have to become, you have come that you will become an instrument Amen. that brings healing to others. आप इसलिए आए हो कि आप दूसरों के लिए चंगाई का एक माध्यम बन जाओ। Amen. Thousands are going to rise in Nagaland, हजारों उठ खड़े होंगे नागालैंड में, and they will walk in the power of God. और वो परमेश्वर की सामर्थ्य में चलेंगे। They will not just preach about Jesus, they will demonstrate the resurrected Jesus. वो सिर्फ यीशु के बारे में, वो जिंदा यीशु If का you प्रमाण believe देंगे। it, shout aloud, अगर आप amen. मानते हो तो जोर से आमेन कहो। Amen. Do you know when Jesus was healing, religious leaders were filled with jealousy, भर गए थे and जलन it से उसके hasn't खिलाफ। changed. और आज भी ये बात बदली नहीं है। Luke chapter 13 verses 14. But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on the Sabbath. लूका 13 उसका 14, आराधनालय के सारे सरदार रिसिया कर कुड़कुड़ाते हुए कहने लगे, क्योंकि यीशु ने सबके दिन किसी को चंगा किया था। I'm telling you, मैं बता रहा हूँ, mark my words. मेरे शब्दों को नोटिस कर लो। An outpouring is coming where God is going to use Gen Zs to manifest His power. एक ऐसी बेदारी आ रही है जहां परमेश्वर जेनजीज को यूज करेगा। You चंगाई will के hear अपनी सामर्थ्य के stories लिए। of Gen Zs raising the dead, casting out demons, oh, healing the sick. God will demonstrate His power through Gen Zs. आप गवाहियां सुनेंगे, जेनजीज के द्वारा परमेश्वर बीमारियों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण करेगा जेनजीज के द्वारा यीशु के नाम में। Hallelujah. Oh. When the older generation says it's not possible, God says, watch me. I'm gonna raise up a David. I'm gonna raise up a Daniel. I'm gonna raise up a Samuel. Oh, I'm gonna raise up a young man, a young woman, and show you what is possible. जब बूढ़ी पीढ़ी कहती है ये संभव नहीं है, परमेश्वर कहता है मेरी ओर देखो, मैं एक जवान पीढ़ी को उठाऊंगा, दाऊद की तरह, एक जवान सामुएल की तरह, एक जवान दानियल की तरह, जो वो संभव कर दिखाएगा जो तुम कहते हो असंभव है। Is there a young David here? क्या यहाँ पर कोई जवान Is दाऊद there a है? young Daniel क्या here? यहाँ पर कोई Is जवान there a दानियल young है? Samuel क्या here? यहाँ जवान सामुएल है? Hallelujah. 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 I am telling you, a Joshua generation is rising मैं up. आपको बता रहा हूँ एक यहोशू पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है। A generation that will possess the promised land. एक पीढ़ी जो वायदे के देश पर कब्जा कर लेगी यीशु के नाम में। A generation that will fulfill the prophecies that we have heard from decades. A generation that will walk into that prophetic promise. एक पीढ़ी जो सारी भविष्यवाणियों पर कब्जा कर लेगी, जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं यीशु के नाम में। Come on, if you believe, shout अगर hallelujah. मानते हो तो हालेलुया कहो। Amen. Oh, do you know Jesus was only 30 when he started his ministry? So he was a young man. आप जानते हैं यीशु केवल 30 बरस का था जब उसने सेवकाई शुरू की। वो एक जवान लड़का था। And now he's going out and healing the sick and casting out demons, and the big crowds are following him. And there are these Pharisees with white
long beards, and now they're filled with jealousy because a 30-year-old boy is walking in signs, wonders, and miracles. और अब वो जा रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे लग गई है और ये बड़ी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी वाले जो धार्मिक लोग हैं वो जल रहे हैं कि उनके पास कोई नहीं आ रहा है। Look around you. देखो आसपास, Look around you. अपने आसपास देखो। A generation of young people is rising up. जवान लोगों की एक पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है। Woo! Glory! Huh? People say, oh, these young people, they live in sin. लोग कहते हैं अरे जवान लोग तो पाप में जीते हैं। God is saying, परमेश्वर कह रहा है I am raising a generation मैं एक ऐसी पीढ़ी को उठा के खड़ा कर रहा हूँ that will walk in my power and that will walk in the purity. जो मेरी सामर्थ्य में और मेरी पवित्रता में जिएंगे। Oh, sin will have no dominion over them. ओ पाप का उन पर कोई राज्य नहीं होगा। Sin will have no dominion over them. पाप उन पर कोई प्रभुता नहीं करेगा। Hallelujah. They will not be found in pubs. They will not be found in wine shops. They will be found in the house of the Lord, worshiping the King, walking in signs and wonders, and setting the people free of their sicknesses and में नहीं diseases. मिलेंगे, वो शराब की दुकानों में नहीं मिलेंगे, वो परमेश्वर के घर में मिलेंगे। वो बीमारों को चंगा करते हुए परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों में चलते हुए दिखाई Come on, देंगे। if you believe it, shout अगर आप मानते हो Amen. तो आमीन कहो। Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। To say that healing is not important ये कहना कि चंगाई is महत्वपूर्ण to नहीं, say that a major part of the ministry of Jesus was not important. वो ये कहना है कि यीशु की सेवकाई का बहुत बड़ा हिस्सा बेकार था। To say healing is time waste is to say Jesus wasted his time ये कहना कि healing the sick. ये कहना कि चंगाई करना टाइम वेस्ट करना है, ये कहना है कि यीशु ने अपना टाइम वेस्ट किया। Let me बीमारों ask को you चंगा करने something. में। If you know you only have 3 years left, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपको ये पता लगे कि आपके पास 3 साल would बचे you हैं, do anything that is not important? तो आप कुछ ऐसा करोगे जो बेकार है, जो जरूरी नहीं है। Jesus knew his ministry is only for 3 years. यीशु को पता था उसकी सेवकाई सिर्फ 3 साल की है। But then also, तब भी 1/3 of the ministry of Jesus was healing the sick. उसकी सेवकाई का 1/3 हिस्सा बीमारों को चंगा करना था। My dear family in Nagaland, मेरे प्रिय नागालैंड परिवार, I'm telling you, मैं आपको this बता रहा हूँ, revival is about God delivering. ये बेदारी इस बारे में है कि परमेश्वर हमें धर्म की आत्मा से And छुटकारा दे रहा है imparting the spirit of faith in your hearts और विश्वास का आत्मा आपके दिलों में भर रहा है and filling you with the love for his word. और आपको उसके वचन का प्रेमी बना रहा है। A generation that knows the word. एक पीढ़ी जो वचन को जानती है, A generation that knows their God. एक पीढ़ी जो अपने परमेश्वर को जानती The है। Bible says that those who know their God will do exploits. बाइबल कहती है जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो महान काम करेंगे। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I want to ask you, if मैं आपसे पूछता हूँ, if people come to a church and they don't get set free and there is no power of God, then why should they come just to hear a nice speech? अगर लोग हमारे चर्च में आते हैं और वो छुटकारा नहीं पाते, चंगे नहीं होते, तो वो हमारे चर्च में क्यों आए? अच्छा There भाषण are सुनने के better लिए। motivational speakers outside in the world who can speak better than us. दुनिया में बहुत अच्छे प्रचार करने वाले लोग हैं जो
जो No, प्रोत्साहन we सिखाते were हैं। not anointed to give nice sermons. We were anointed to set the captives free. नहीं, हमारा अभिषेक अच्छे प्रचार करने के लिए नहीं हुआ, हमारा अभिषेक बंधन में पड़ों को आजाद करने के लिए हुआ है। The Bible says in Acts 10:38 how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power, that he went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil, for God was with him. बाइबल प्रेरितों के काम 10:38 में कहती है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी का कैसा पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो बीमारों को चंगा करता और जो सब शैतान के सताए थे उन्हें आजाद करता गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। If you are sick today, अगर आप आज बीमार हो, you get healed first, आप पहले चंगे होते हो and then और तब you become an instrument of healing for others. आप दूसरों के लिए चंगाई का एक माध्यम बन जाते हो। I was 19. मैं 19 साल का था। I had a nerve disorder, a mental disorder. मुझे एक नसों की एक मानसिक बीमारी थी। I was dying when I was 19. I was 19 suicidal. 19 की उम्र में मैं मरने के कगार पर था, आत्महत्या करना चाहता था। Devil wanted to kill me when I was 19, but when I gave my life to the Lord, I said, Lord, make me a vessel that brings your healing to masses. शैतान मुझे मारना चाहता था, लेकिन जब मैंने प्रभु को जान लिया, मैंने उद्धार पाया, मैंने कहा प्रभु All मुझे that एक you have to माध्यम do बना is desire tonight. कि मैं तेरे लोगों को चंगा करूं, और आपको आज सिर्फ चाहत करनी है। Look around you. आसपास देखो, The world is messed up. दुनिया की हालत खराब है, And God is saying, where are my sons and daughters? और परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे और बेटियां कहाँ हैं? Where are those I can send them and bring my healing to the world? I कहाँ can है? set them and set the captives free. कहाँ है वो जिन्हें मैं दुनिया में भेज सकूं, बंधन में पड़ों को आजाद कर सकूं? Every Sunday, so many times, we get testimonies of people who decided they're going to end their life, and they came to the church, the power of God came on them, and they got completely delivered. Imagine these people would have taken their life. हर संडे को हमें गवाही मिलती है, लोग चर्च में आए होते हैं जिन्होंने ठान लिया होता है कि वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन वो कलीसिया में आए, परमेश्वर का सामर्थ्य उन पे उतरा, उनको आजाद कर दिया। सोच के देखो, उन्होंने जिंदगी खत्म कर ली होती अपनी। How God anointed Jesus of Nazareth. कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक किया। God anoints men and women to do His service. परमेश्वर पुरुषों और स्त्रियों को अभिषेक करता है अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए। And few are not enough. और कुछ थोड़े लोग काफी नहीं This is है। my desire. ये मेरी चाहत है All of you will rise up. कि आप में से सब उठ खड़े All होंगे। of you will rise up आप में से सब उठ and खड़े carry होंगे the gospel और सुसमाचार with को the लेकर power of जाएंगे। the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के Let साथ all of you rise up. कि आप में से हर कोई खड़ा हो जाए। I meant spiritually, but since you are standing, we're going to pray. मैं आत्मिक रूप से कह रहा था, लेकिन आप खड़े हो गए तो हम प्रार्थना करेंगे। How many people here want to receive the anointing of the Holy Spirit? कितने लोग यहाँ पर हैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं? You know, I know Naga people love to come and run in front, but we are not going to do that for a reason. मैं जानता हूँ नागा लोगों को पसंद है भाग के आगे आना, लेकिन एक कारण से हम ये नहीं करेंगे। Because I don't want those at the back to think that anointing is only for those who are in the front. मैं नहीं चाहता जो लोग पीछे हैं उनको ऐसा लगे कि अभिषेक सिर्फ उनके लिए जो आगे खड़े हैं। No, no, no. You No, no, can no. be there, the last person standing there. You can be up there in the balcony. But wherever you are, if you are hungry, the power of God will come upon you wherever you are. आप वहाँ पीछे खड़े हुए आखिरी व्यक्ति हो सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप भूखे हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पे उतर आएगा आज। Come on, I want to ask you, if you really want to be an instrument of God's power, if you really have a desire to set the captives free, then lift up your hand and cry out and tell Him, Jesus, anoint me tonight so that I can become a vessel that carries
carries your power. मैं कहता हूँ अगर आप आज उसके सामर्थ्य का बर्तन बनना चाहते हैं तो जहाँ भी अपनी आवाज को उठा से कहे परमेश्वर मुझे आज अपने अभिषेक से भर। Come on, tell him, Jesus, fill me with your power. उससे कहे यीशु मुझे अपनी सामर्थ्य से भर। And if you're hungry, the power of the Holy Ghost is coming upon you right now. और अगर आप भूखे हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पे अभी उतर के आ रहा है। Wherever you are, जहाँ पर भी आप हो the anointing of the Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर अभी उतर रहा है। You will walk in signs and wonders. आप चिन्ह चमत्कारों में चलेंगे। You will walk in signs and wonders. आप चिन्ह चमत्कारों में चलेंगे। You will heal the sick. आप बीमारों को चंगा You करेंगे। will cast out demons. आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। God's power will be displayed through you. परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा दिखाई देगा। Come on, receive the anointing in Jesus' name. ले लो अभिषेक के समय। Cry out उसको with all your पुकारे। heart. Cry out. अपने पूरे दिल से Tell him, Lord, fill me उससे कहे प्रभु मुझे भर दे with your power. अपनी सामर्थ्य से। Come on, the power of God is coming upon so many. The Permeshwar anointing ka of the Holy Ghost is coming upon so many. Permeshwar ka God सामर्थ is बहुत- marking so many for His ministry. उसका अभिषेक उतर रहा है। पवित्र आत्मा की ताकत उतर रही है। परमेश्वर God बहुतों is को अलग कर रहा marking है। so many for His glory. परमेश्वर की सेवकाई अपनी महिमा के लिए बहुतों को अलग कर रहा है। You shall be the vessels of His glory. आप उसकी महिमा के बर्तन ठहरोगे। You shall be the vessels of His power. आप उसकी सामर्थ्य के बर्तन ठहरोगे। As you hunger and thirst, you are being filled right now. जब आप भूखे और प्यासे हैं तो आप भर रहे जा रहे हैं उसके लिए अभी। You are receiving according to your hunger. आप अपनी भूख के Filled. अगर आप भूखे हैं तो आप भर कर यहाँ से जा रहे हैं। Come on, cry out to Him. पुकारे उसको। Say, Father, I don't want to be an ordinary believer. कहे पिता मैं एक साधारण Anoint me for your glory. अपनी महिमा के लिए मेरा अभिषेक कर। Fill me with your power. मुझे अपनी सामर्थ से भर। Many mighty men and women of God will rise up from this place in the name of Jesus. बहुत से महान परमेश्वर के सेवक इस जगह से उठ खड़े हो रहे हैं समय यीशु के नाम में। Many generals of faith will rise up from this place that will shake nations for His glory. बहुत से विश्वास के जनरल इस जगह से उठ खड़े हो रहे हैं जो देशों को हिला देंगे उसकी महिमा के लिए।
Many apostles, prophets, pastors, teachers, and evangelists are rising from this place in Jesus' name. बहुत से apostles, prophets, pastors और teachers इस जगह से उठ खड़े हो रहे हैं यीशु के नाम में. You are being marked for life. You are being marked for life. आप जिंदगी भर के लिए चिन्हित किए जा रहे हैं. तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है. तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है. Jesus is healing Nagaland. जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है. तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है. स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे
तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। Nagaland, lift up your voices. तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। Hallelujah. Many of you have been marked by God for greatness. आप इससे बहुत लोगों को Amen. परमेश्वर ने And very महानता के लिए चिन्हित soon, किया है। entire India will see and nations will see as sons and daughters of God rise up from Nagaland. और बहुत जल्द पूरा भारत देश, पूरी दुनिया देखेगी वो परमेश्वर के महान लोग जो खड़े हो रहे हैं। So today we are going to do something. We will celebrate for the testimonies before. How many people are here ready for celebration? I want you to celebrate as if you have got your miracle. मैं चाहता हूँ आप आज सेलिब्रेट करें ऐसे जैसे आपको आपका चमत्कार मिल चुका है। Amen. Amen. People in the world say thank you after they receive the gift. People in the kingdom say thank you before receiving the gift because they see by the eyes of faith. दुनिया के लोग गिफ्ट मिलने के बाद थैंक यू बोलते हैं, लेकिन राज्य के लोग गिफ्ट मिलने से पहले धन्यवाद बोलते हैं। Are you ready to rejoice? जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, Everyone, everywhere, you are the light of the जय world. बोलो, जय Come on. बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे अंधों को
आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। तो जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कैंसर को चंगा किया यीशु ने, ट्यूमर को चंगा किया यीशु ने, ट्यूमर को चंगा किया यीशु ने, कैंसर को चंगा किया यीशु ने, कैंसर को चंगा किया यीशु ने, ट्यूमर को चंगा किया यीशु ने, ट्यूमर को चंगा किया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय Are you ready? In बोलो, one, two, जय बोलो, जय बोलो, jump, यीशु मसीहा की come on, जय बोलो, hey, jump, बोलो, jump, come on, जय बोलो, jump, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, 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 यीशु मसीहा की, बोलो यीशु मसीह की। अच्छा, अभी भी I know many people you have not turned on your flashlight. Can you just turn it on? Everyone. Come on, this is the last night. ये आखिरी रात है जब हम ऐसे gather हो रहे हैं. Come on, everyone, take out your phone. Come on, not some but all. Come on, turn on your flashlight. আমি সব মানুষ খান ফোন লাইন অন করব। Ami Khan, Ami Khan, phone turn on. Hallelujah. Come on, everyone. Har koi.
कितने लोग तैयार हैं बल्ले बल्ले करने के लिए? हालेलुया। बल्ले बल्ले यीशु दी 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 बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तू मेरा बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तू मेरा बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान तू मेरा बल्ले यीशु दी बल्ले 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 बल्ले औना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज गए औना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज गए वेखेगा जहान कहना बदला ने सज गए वेखेगा जहान कहना बदला ने गज गए औना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज गए औना चिट्टे घोड़े उत्ते तुइयों यीशु सज गए वेखेगा जहान कहना बदला ने सज गए वेखेगा जहान कहना बदला ने गज गए तेरी तलवार यीशु चले चले रखे शैतान तू मेरा थल्ले तेरी तलवार यीशु चले चले रखे शैतान तू मेरे बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा बल्ले यीशु दी बल्ले 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 बल्ले जेड़ा रखे तेरे ते ईमान ओयो बचदा जेड़ा रखे तेरे ते ईमान ओयो बचदा तू यो फरमान दिता सानू हक सच दा तू यो फरमान दिता सानू हक सच दा जेड़ा रखे तेरे ते ईमान ओयो बचदा जेड़ा रखे तेरे ते ईमान ओयो बचदा तू यो फरमान दिता सानू हक सच दा फरमान दिता सानू हक सच दा तू यो साडे नाल नहीं ओ गल्ले गल्ले रखे शैतान तू मेरा थल्ले तू यो साडे नाल नहीं ओ गल्ले गल्ले रखे शैतान तू मेरा बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले तू पैरा थल्ले और चाहिए तेरा जलाल हमें 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 और चाहिए तेरा
चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए Hallelujah. Isn't it awesome to be a part of something historic that God is doing here? कितना अद्भुत है एक ऐसे इतिहास का हिस्सा होना जो परमेश्वर रच रहा है. Now hear this. When I look around what God is doing, जब मैं and I आसपास see देखता so हूँ many young people, I see so many Gen Zs. और इतने Do you जवानों know को what देखता हूँ, God is trying to Gen Zs को say देखता to हूँ. you, Nagaland? अब जानते हैं परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं नागालैंड. God is telling the devil, you have no chance. परमेश्वर शैतान से कह रहा है शैतान तेरे पास कोई God चांस is नहीं है. telling the devil, you have no chance with this generation. They are mine. परमेश्वर कह रहा है शैतान तेरे पास कोई चांस नहीं है ये पीढ़ी मेरी है. They will not serve drugs. They will not serve alcohol. They will serve me, your father is saying. वो ड्रग्स की सेवा नहीं करेंगे वो तेरी सेवा नहीं करेंगे वो मेरी सेवा करेंगे पिता कह रहा है. I'm telling you, this revival is a demonstration that the coming generation belongs to the Lord. ये बेदारी इस बात का चिन्ह है कि आने वाली पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह की है. Hallelujah. God is laughing at devil. परमेश्वर हंस रहा है Devil has शैतान no पर. chance. शैतान के पास कोई मौका Devil नहीं has है. no chance. शैतान के पास कोई A मौका नहीं है. righteous generation is rising up. एक धार्मिक पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है. Amen. Hallelujah. Oh, glory. Woo! Come on, make some noise for Jesus. यीशु Oh, एक मिनट मजा नहीं आया. I know dinner नहीं किया. Come on, Nagaland, make some noise for Jesus. Hallelujah. Satan is a loser शैतान and हारा our हुआ है. Jesus is victorious. और यीशु जयवंत है And you are more than overcomers in और him. आप जयवंत से बढ़कर हो. यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी. पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान. यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी. पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान. देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान. देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान. देखो भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान. देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान. यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी. पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान. देखो भागा भागा देखो देखो भागा भागा शैतान. देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो
देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान हाँ झुक जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर और झुक जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर देखेगी दुनिया शान मसीह की होगा जुबां पर ये गीत सबके और देखेगी दुनिया शान मसीह की होगा जुबां पर ये गीत सबके ला 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 La 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 यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा से ला 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 It is going to get better. बेहतर होने वाला है This last night we are not going home just like this. ये आखिरी रात हम ऐसे घर नहीं जा रहे हैं Amen. Woo. Amen. 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 Okay. So we have an amazing surprise, amazing fireworks for you in the end. अमेजिंग सरप्राइज आपके लिए अंत में But before this, उससे पहले I know it's impossible for people who are getting healed, who got healed, and who will get healed to come and testify. But I encourage you, whoever gets healed, if you can, go to social media, put your testimony, let the world see that Jesus is still the healer. And those who don't believe you, stick your medical report on their face. Pachak! जो लोग चंगे हो रहे हैं सोशल मीडिया पे अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट उनको दे जो विश्वास नहीं करते Okay, you can tag our page as well. Amen. So, for the people who are sick, are you ready to receive your healing? जो लोग बीमार हैं अपनी चंगाई को लेने को तैयार हो Pastor, come here. You are standing very far. No. It's God's glory. We're one family. So, I loved it. I read somebody did a poll why people are coming in this revival.
Because people say, oh, all these crowds, they're just going for healing. लोग कह रहे थे लोग तो चंगाई के लिए जा रहे हैं वहाँ पे. I see so many young people who are so fit. बहुत से जवान लोग देख रहा हूँ जो इतने फिट हैं. So he had put 4 options. तो जिसने पोल किया था Healing. उसने 4 ऑप्शन रखे थे. चंगाई, Worship, आराधना, to be revived, बेदारी and पाने के 4th लिए, was to receive the word of God. और चौथा था परमेश्वर का वचन पाने के लिए. And I was so amazed to read 73% said we have come to receive the word of the Lord. और मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ देख करके 73% लोगों ने लिखा था कि वो Oh, वचन के लिए आए हैं. Nagaland is changing. नागालैंड बदल रहा है. This young generation is becoming hungry for the जवान word. पीढ़ी वचन के लिए भूखी और प्यासी हो रही है. And I'm telling you, as you मैं आपको बता रहा honor the word, जब आप वचन का आदर करते हो, oh, hallelujah, the Lord will put you on the mountaintop for His परमेश्वर glory. आपको पहाड़ों की चोटियों पर रख देगा अपनी महिमा के लिए. He will display His glory through you. वो अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा दिखाएगा. So I know we cannot take many testimonies, मैं जानता हूँ but बहुत we're सी going to गवाहियां pray नहीं ले and पाएंगे. maybe take few. लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, कुछ गवाहियां लूंगा, And then we are going to dance together, celebrate, and then we can have the और fireworks. फिर हम साथ में आनंद मनाएंगे और तब फायरवर्क्स होंगे. Somebody, we did a crusade and someone said to me, why are you wasting money with these fireworks? हमने क्रूसेड किया और कोई कहता कि आप फायरवर्क पे पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? You're wasting money. आप पैसे वेस्ट कर रहे हो. Why? क्यों? Fireworks are only for crusades? No. It's for my King Jesus. We're going to have the best meeting. फायरवर्क क्या दुनिया के लोगों के लिए? नहीं, मेरे यीशु के लिए है. सबसे बेस्ट इसके लिए है. When people do fireworks in their marriage because they are celebrating, जब लोग शादी में पटाखे बजाते हैं क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. when a football team wins, they celebrate. जब फुटबॉल टीम जीतती है तो वो सेलिब्रेट करते हैं. Various celebrities, when they do their concerts, they celebrate. बहुत से सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट करते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं. We are also celebrating the victory of Lord Jesus Christ of हम Nazareth. भी तो प्रभु यीशु मसीह की जय को मना रहे हैं. And let me tell you why we do that. और मैं आपको बताता हूँ हम ये क्यों करते हैं. We do that because we can. इसलिए करते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं. Because we want to tell that Indian church, a blessed church, is rising up. क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि इंडिया की जो कलीसिया एक आशीषित कलीसिया उठ खड़ी हो रही है. A blessed church is rising up in India. एक आशीषित कलीसिया उठ खड़ी हो रही है इंडिया में. Amen. The power of God is already in this place. परमेश्वर का सामर्थ्य जगह पर पहले से है. You know, when we see the Old Testament temple, we see how God wanted His temple to be. जब हम पुराने नियम का मंदिर देखते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर कैसा चाहता था उसका मंदिर हो, उसका भवन हो. He said, "Put the best in my house." उसने कहा सबसे बेस्ट मेरे घर में लगाओ. So if you are sick, and let me अगर कोई tell you बीमार one है, thing. मैं ये कहूँगा, Many people miss their healing because they are looking for a miracle. बहुत से लोग चंगाई इसलिए This गवाते हैं, वो lady who चमत्कार came in the ढूंढते हैं. ambulance, वो महिला जो एम्बुलेंस I में told आई थी, her, "You believe that your healing starts now." मैंने उनसे कहा था अभी विश्वास करो आपकी चंगाई शुरू हो गई है. Sometimes healing manifests in a process, but because people, what happens instantly is a miracle. कई But बार- don't miss your healing because you didn't get your miracle. कई बार चंगाई एक प्रक्रिया में होती है, पर अपनी चंगाई मत गवा दो ये सोच के कि आपको तुरंत चमत्कार मिल जाएगा. In our church, there is a boy, Aditya, हमारे चर्च में एक लड़का है, paralyzed entire body. पूरे शरीर में उसको लकवा मारा हुआ था. His mom brought him in a wheelchair, उसकी मम्मी एक व्हील चेयर में उसको लाई थी and he was like a vegetable. और वो बिल्कुल दयनीय हालत में था. He couldn't move. वो हिल भी नहीं सकता था. And we prayed for him. हमने उसके लिए प्रार्थना किया. No change. कोई बदलाव नहीं आया. No change. कोई बदलाव नहीं दिखा. They took him like that. उसको वैसे वापस लेके गए. 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद Aditya comes आदित्य आता walking in the church with his है, mother. चर्च में चलता हुआ आता अपनी मम्मी के साथ. Come on, look at that. Look at the picture. देखिए He तस्वीर comes को. walking in the वो चलता हुआ church. चर्च में आता है. Hallelujah. My Hallelujah. Jesus is the मेरा healer. यीशु चंगा करता है.
And what did this healing do? और इस चंगाई ने क्या किया? His mom became a believer. उसकी मम्मी विश्वासी Aditya बन became a गई। believer. आदित्य His विश्वासी dad बना। became a believer. उसके पापा विश्वासी His बन गए। grandfather became a believer. उसके दादा विश्वासी His बन गए। auntie became a believer. उसकी आंटी His विश्वासी बन uncle गई। became a believer. उसके अंकल विश्वासी बन गए। And today his mother is a passionate lover of Jesus. और आज उसकी मम्मी यीशु के लिए दीवानी प्रेमी है। He said, what was impossible, Jesus did it. He is the living God. जो असंभव था वो यीशु ने कर दिया, वही सच्चा परमेश्वर है। Amen. So hear this. All who are sick and hearing my voice, वो सब लोग जो बीमार हैं मेरी आवाज को सुन रहे I'm हैं, going to pray for you now. मैं आपके लिए अभी प्रार्थना But you करूंगा। believe your healing starts now. लेकिन आप विश्वास करो आपकी चंगाई अभी शुरू हो रही है। Your healing starts now. आपकी चंगाई अभी शुरू हो रही है। Many will be healed instantly. बहुत से लोग तुरंत चंगे हो जाएंगे। Many will be healed while they are going home. बहुत से लोग घर जाते जाते चंगे होंगे। Many, when they'll get in the morning, they'll find there is no tumor, there is no pain. बहुत से लोग जब सुबह उठेंगे तो पता लगेगा कोई ट्यूमर नहीं है, कोई दर्द नहीं है। But the Bible says, hold fast your confession of faith without wavering. पर बाइबल कहती है विश्वास के अंगीकार को पकड़े रहो बिना हिले हुए। We always tell people. हम हमेशा लोगों से कहते हैं। Do we have the testimony of man with the mouth cancer? God gave me a word that there is a man in our church. He has cancer and the smell of a rotten flesh comes. परमेश्वर ने मुझे एक व्यक्ति के लिए वचन दिया। हमारे कलीसिया में वो आ रहे थे, उनको मुंह में कैंसर था और सड़े हुए मांस की स्मेल आती थी। And he came, and when we looked, can you put it on the screen? If you will. His face was completely eaten by cancer. उनका मुंह पूरा कैंसर ने खा लिया था। I'm sorry, it's a little graphic picture. थोड़ी ग्राफिक तस्वीर है। Okay? Completely eaten by cancer. पूरी तरह से कैंसर ने खा लिया था। So I prayed for him. मैंने उनके लिए प्रार्थना की। No change. कोई बदलाव नहीं हुआ। But that night, लेकिन उस रात he started eating food. उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। And how many months later he came to church completely? 6 months. His healing was happening. And after 6 months, can you show his picture? 6 महीने बाद वो Without surgery. Look at that man. बिना surgery के। Completely healed देखिए by उनका the चेहरा। power of Lord Jesus Christ of प्रभु यीशु Nazareth. की सामर्थ के द्वारा पूरी तरह चंगे हुए। Who says Jesus does not heal anymore? कौन कहता है यीशु चंगा नहीं करते? My Jesus is the healer. मेरा यीशु चंगा करता है। Amen. I showed this picture to a doctor, one of my doctor friend. मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त को एक फोटो दिखाई। He lives in another country. वो किसी दूसरे देश में रहते हैं। He says, उन्होंने कहा this is impossible. कि ये तो असंभव बात है। Even with surgery, you cannot do this. सर्जरी से भी आप इतना अच्छा नहीं कर सकते। This is impossible. ये तो असंभव बात है। But we have a master surgeon and his name is Jesus. लेकिन हमारा एक मास्टर सर्जन है, उसका I नाम am यीशु telling है। you, I declare tonight that master surgeon will come in your bedroom and will perform a supernatural surgery for you in Jesus' मैं name. एक घोषणा करता हूँ, वो मास्टर सर्जन आज रात आपके बेडरूम में आएगा और एक अलौकिक सर्जरी आपके ऊपर करेगा यीशु के नाम में। His hands can reach to a place where human surgery knife cannot go. उसके हाथ उस जगह गहराई तक जा सकते हैं जहाँ सर्जरी का चाकू नहीं पहुंच सकता। Do you believe Jesus is the healer? क्या आप मानते हो यीशु चंगा करता है? Do you believe क्या you आप are मानते getting हो? healed tonight? क्या आप आज चंगाई पाओगे? Jesus would always ask people this. Do you believe that I can do this for you? यीशु हमेशा लोगों से पूछे थे क्या तुम क्योंकि जो आप मानते हो वो महत्व रखता है। There are some people who are casual. Jesus, कुछ लोगों को who फर्क नहीं is पड़ता। full of God, he goes to his town and people are familiar. They say, oh, we know who he is. यीशु जिसमें परमेश्वर की परिपूर्णता है वो अपने जगह जाता है और लोग कहते हैं हम तो जानते हैं तो And the बड़े का Bible बेटा। says Jesus could not do mighty miracles there. और बाइबल कहती है यीशु वहां पर महान चमत्कार नहीं कर सका। Hear this carefully, my family. That means the attitude of your heart इसका मतलब आपके दिल का जो रवैया है can either hinder the power of God or can receive the power of God. या तो परमेश्वर की सामर्थ को रोक सकता है या परमेश्वर की सामर्थ को खोल सकता है।
If you're like, I know this doesn't happen, that will happen to you exactly as you believe. अगर आप ऐसा मानते हो अरे ये सब नहीं होता, तो आपके साथ वैसा ही होगा, कुछ नहीं होगा. But if you're full of faith and you can say, no, my Jesus is here, I believe my healing starts tonight. अगर आप विश्वास से भरे हुए कहते हो मैं जानता हूँ मेरा यीशु आज यहाँ है और मेरी चंगाई आज रात शुरू होती है, then it will happen to you exactly like that. तो आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा. You know, one night as I was praying for next day church, the Lord told me, He said, my son, go and tell my people, you don't have to die in your sickness because I died for you. एक दिन जब मैं वचन तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरे बेटे जाके मेरी कलीसिया से कह दो तुम्हें बीमारी में मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं. The word of God says, He will परमेश्वर का bless वचन you कहता है with a long life वो आपको दीर्घायु से तृप्त and करेगा show you His salvation. और अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा. I will bless you with a long life. Show salvation and long life are connected. मैं तुम्हें उद्धार और Jesus लंबा जीवन दिखाऊंगा. died early जुड़ा so हुआ है. that He can give you a long life. यीशु छोटी उम्र में इसीलिए मर गया कि वो आपको एक लंबी आयु दे. Amen. So that, think about this. If we are the witness of Jesus, अगर if हम you have a यीशु के court गवाह हैं, case, और आपका कोई कोर्ट केस है, would you ever want your witness to die before his time? Or would you ever want your witness to be sick आप on कभी the court चाहोगे जो hearing? आपके कोर्ट केस का गवाह है वो बीमार पड़ जाए, टाइम से पहले मर जाए? If you don't want your witness to be sick, Jesus doesn't want his witnesses to be sick. अगर आप नहीं Because if चाहते- you're sick, you cannot even go to your bathroom. Jesus said, go into all the world and preach the gospel. Forget about going to nations. अगर आप बीमार हैं तो आप गवाही नहीं दे सकते. यीशु कहता है कि दुनिया भर में जाओ गवाही दो, कोई बाथरूम तक नहीं जा पाएगा बीमार है तो दुनिया तो भूल जाओ. Jesus is not looking for weak and timid witnesses. Jesus wants bold, filled with power witnesses. यीशु डरने वाले और कमजोर नहीं, लेकिन सामर्थ्य और साहसी गवाह को ढूंढ रहा है. And we can show you testimony after testimony after testimony of healings. गवाहियों पर गवाहियां दिखा सकते हैं चंगाई की. You know, we live in a world where people mock the healings that Jesus do. हम एक They ऐसी call दुनिया us में frauds. जहाँ लोग चंगाई का मजाक उड़ाते हैं, हमें These झूठा people are बोलते हैं. fake. ये लोग झूठे हैं, नकली हैं. That's why we have a very strict, in Delhi we have a group of doctors that verify healings with medical reports and then we show them on our page. इसीलिए दिल्ली में हमारी एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जो हर एक रिपोर्ट को चेक करते हैं इससे पहले कि हम लोग गवाही दिखाएं. And every Sunday, और हर nurses are coming and getting healed. Doctors are coming and getting healed. Nurses- Because now these doctors know that there is a doctor who is a bigger doctor than them. नर्सेज आके चंगी होती हैं, डॉक्टर्स आके चंगे होते हैं, क्योंकि अब ये डॉक्टर्स जानते हैं कि उनसे बड़ा एक डॉक्टर है जो उनको चंगा करता है. Amen. This is your night. ये आपकी रात है. This is your night. आज की रात आपकी रात I है. said this is your night. मैंने कहा ये आपकी रात है. Tonight, as I'm gonna pray, you believe it has started and hold fast your confession and you thank the Lord. Thank you, Father. I have timestamped the healing. When I'll pray, I want you to note the time. Write it on your phone. Take out the notepad. Write down. At this time, I received my healing. आज जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप विश्वास करें कि आपकी चंगाई आपको मिल चुकी है. वो टाइम नोट करें, अपने फोन में लिखें कि ये समय है जब मुझे आज अपनी चंगाई मिल चुकी है. And then when you sleep at night, जब रात को सोने जाओ, thank the Lord for your healing. प्रभु को धन्यवाद देना. When you अपनी get up चंगाई in the के लिए. morning, सुबह उठो, thank the Lord for your healing. प्रभु को धन्यवाद देना. And अपनी see चंगाई what के will लिए. happen. और देखना क्या होता Your है. reports are going to change in Jesus' name. आपकी रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में. So are you ready to receive your healing? तैयार हो आप अपनी चंगाई लेने के लिए. And I want you to keep your right hand on the part where you're suffering. अपना दाहिना हाथ उस भाग में रखे जहां आपको कोई बीमारी है. If there are people who are with you who are deaf and dumb from birth, I want the person who is with them, put your fingers in their ears. अगर आपके साथ कोई है जो बहरा या गूंगा है, तो अपने
अपनी उंगली उनके कानों में डालें, उन पर हाथ रखें। I know Nagas are very shy, but I'm telling you, we have to come to a place where we are not ashamed of the gospel, where we are not ashamed to give Him glory. मैं जानता हूँ नागा लोगों को बहुत शर्म आती है, लेकिन हमें उस जगह आना है जहाँ सुसमाचार से हम शर्माते नहीं हैं। यीशु मसीह से के लिए शर्मिंदा नहीं, उसकी गवाही के You know, लिए। so many people after the meeting, they'll come, they'll say, Pastor, I got healed. सभा के बाद बहुत लोग आके बोलते हैं, He said, "पास्टर, why नहीं did you हुआ?" come? हम बोलते हैं, क्यों नहीं आए? I'm shy. ओ, मुझे शर्म आ रही थी। What? क्या Shy? शर्म आ रही थी? Jesus went on the cross naked for us. The least we can do is boldly declare to the world what He has done for us. यीशु हमारे लिए क्रूस पर नंगा चढ़ गया। जो सबसे थोड़ा हम उसके लिए कर सकते हैं, दुनिया के सामने घोषणा कर सकते हैं उसने हमारे लिए क्या किया है। Imagine if Jesus would have said, I want to die for their sins, but I'm shy. कल्पना करो अगर यीशु कहता मैं इनके पापों के लिए मरना चाहता हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है। No, नहीं, no. नहीं। Yes, He suffered shame on the cross, but His love for us was greater. हाँ, उसने क्रूस पर शर्मिंदगी सहली, लेकिन उसका प्रेम हमारे लिए महान था। I pray that spirit of shame shall be broken tonight over Nagaland. मैं प्रार्थना करता हूँ वो शर्म का आत्मा आज नागालैंड पर I से टूट pray जाए यीशु के every नाम में। churches in Nagaland, people will line up to give healing testimonies to say, Jesus healed me, and I want to boldly declare it. मैं ये प्रार्थना करता हूँ नागालैंड की हर एक चर्च में लाइन लग जाए गवाही देने वालों की कि यीशु ने मुझे चंगा किया, और मैं घोषणा करना चाहता हूँ इस बात की। I know that some people say, Pastor, this is my testimony, but don't show my face. मैं जानता हूँ कुछ लोग कहते हैं, Don't write पास्टर my मेरी name. गवाही है, मेरा मुंह मत दिखाना, मेरा नाम मत लिखना। No. नहीं, You should run to testify what Jesus has done. आपको भाग कर गवाही देनी चाहिए जो यीशु ने आपके लिए किया उस बात You की। should run to testify. आपको भाग कर जाना चाहिए गवाही देने Because के you लिए, are a testament of His healing power. क्योंकि आप उसकी चंगाई की सामर्थ्य की एक जिंदा गवाही हो। Amen. आमेन। So come on, it's your time. ये आपका समय है। Keep your right hand on the part where you're suffering. अपना दाहिना and हाथ वहां रखें जहां आप कोई believe, बीमारी में हैं, और विश्वास करें, believe that विश्वास you will करें receive your healing now. कि आपको आपकी चंगाई अभी What मिलेगी। Jesus can do 1 year later, He can do tonight. जो यीशु एक साल बाद कर सकता है वो आज रात भी कर सकता है उसको। Don't put your faith in future. अपनी चंगाई को भविष्य में मत फेंको, Put your faith in now. अपना The विश्वास अब में healer डालो। is in this place वो चंगा now. करता है इस जगह पे अभी मौजूद है। Come on, it's time for you to receive your healing. समय है कि आप अपनी चंगाई Father, को- in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every spirit of infirmity, हर एक रोग और बीमारी की आत्मा के ऊपर, over every spirit of affliction and torment. हर एक सताव और परेशानी की आत्मा के ऊपर। I take authority over मैं cancers. कैंसर पे अधिकार I लेता take हूँ, authority over tumors. मैं ट्यूमर्स पे I अधिकार take लेता हूँ, authority over arthritis. मैं गठिया के I रोग पे take अधिकार authority लेता over हूँ, heart disorders. मैं दिल की बीमारी पे I अधिकार लेता हूँ, command be healed. मैं आदेश देता हूँ चंगे हो जाओ, I declare paralysis be gone. मैं घोषणा करता हूँ लकवे का रोग चंगा हो Paralysis be जाए, healed. लकवे का रोग चंगा हो I जाए, rebuke every spirit of blindness. हर एक अंधेपन का आत्मा मैं डांटता हूँ, I rebuke every deaf and dumb spirit. हर एक गूंगी और बहरी आत्मा को डांटता हूँ यीशु Every के नाम deaf में, and dumb spirit come out in हर एक Jesus' गूंगी और name. बहरी आत्मा बाहर आ जाओ यीशु I के नाम में। command deaf ears to open now. मैं घोषणा करता हूँ बहरे कान खुल जाओ अभी, I command mute tongue to be loosed now. बंद जुबान खुल जाओ अभी, People who are lame, come on, rise up and walk now. वो लोग जो चल नहीं पाते थे उठो और चलो फिरो अभी, I command blind eyes to be open now. मैं आदेश देता हूँ अंधी आंखें खुल जाओ अभी, Every tumor to be dissolved now. हर एक ट्यूमर खुल जाए अभी, Every arthritis to be healed now. हर एक गठिया का रोग चंगा हो जाए अभी। The healing power of Lord Jesus Christ is flowing in this place. Come on, receive your healing. यीशु मसीह का चंगाई का सामर्थ्य जगह बह रहा है, अपनी चंगाई को ले लो, Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, Right now, इसी समय from the crown of your head अपने सर से to the लेकर soles of your feet, अपने पाँव के तलुओं be तक healed. चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ। Come on, quickly check your bodies and do what you could not do before. जल्दी से अपने शरीर को चेक करो और वो करो जो आप नहीं कर सकते थे पहले। And those who got healed, quickly come running forward. We are going to take few testimonies. और जो लोग चंगे हो गए जल्दी से आगे आओ, हम कुछ गवाहियां लेंगे। And I want to
invite the organizing team if you can come on the stage, please. मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को आगे बुलाना चाहता हूँ, अगर आप स्टेज पे आ जाए जल्दी से. If the organizing team can come on the stage. Come on, check your bodies. Those who are getting healed, come on, come forward till the time we're going to just worship the Lord. Come on. Those who are getting healed, come forward. Hallelujah. Woo! Glory! Yes. Yes, what has happened, Minnie? अपोस्टल जी, एक महान गवाही है. सो ये 5 महीने पहले ये छत के 4 माले से गिर गए थे. इनको ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये इनको कोई आराम नहीं मिला था. ये व्हील चेयर में चलते थे, बैसाखी से थे. ये कल बैसाखी में आए और ये खुद अपने पैरों से चल के गए, अपने पैरों से यहाँ पे आया गवाही देने के लिए. हालेलुया. आप इनको माइक दीजिए एक बारी. आप बैसाखी से आए थे कल? आप बैसाखी से आए थे? हाँ यीशु ने चंगा कर दिया? हाँ कर दिया चंगा. अभी चल के दिखाओ. Come on, church! Give him glory! Hallelujah. Come on. Those who are getting healed, keep coming forward till the time we'll just worship. हालेलुया. अपोस्टल जी, एक और गवाही है यहाँ पर मेरे पास, अद्भुत गवाही है. इन बहन को 12 साल से ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम थी. ये बता रही है हर 5-5 मिनट में इनको बाथरूम जाना पड़ता था. डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर दवाई चलेगी, कुछ नहीं हो सकता इसका. जब पहली रात को यहाँ पर आई हैं, प्रार्थना रिसीव करके घर गई, परमेश्वर ने उसी दिन से इनको चंगा कर दिया. पूरी तरह से आजाद हो चुकी है 12 साल के ब्लैडर प्रॉब्लम से. बहन, आप पूरे चंगे. क्या होता था आपको? क्या होता था? मैं बाथरूम से वापस आती थी, फिर बाथरूम जाती थी, और मैं जब बिस्तर पे सोने के लिए आती थी तो फिर मैं वापस बाथरूम जाती थी. मैं बहुत दवा खाई, डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते. लेकिन फर्स्ट नाइट जब मैं रिवाइवल अटेंड करके घर गई, मैंने सपने में देखे कि आप मेरा ले हैंड कर रहे हैं. मैंने सुबह अपने पति को बताया, उन्होंने कहा कि तुमने मिल के आई हो इसलिए सपने में देखी. लेकिन मैं बाद में चेक की तो मेरा तो बीमारी चला गया है, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई दवा नहीं खाई. मैं 12 साल की बीमारी से प्रभु ने मुझे आजाद किया. Thank you. Can we give the best praise to Jesus? Apostle, we have a testimony of a sister. It's a marvelous testimony. So she had been suffering from arthritis for 10 years and she had knee pain for 7 years. But on 2nd of December during the healing service, when you prayed, that time she received her healing. And when she went back home, she heard a crackling sound in her knee, on her right knee. Before she wasn't able to squat or bend, but now she's able to squat and bend as well. So arthritis healed. Hallelujah. Auntie, can you just sit down, show us? Woo! Glory! Hallelujah! अपोस्टल जी, 8 साल से इस बहन की टांग में जलन और दर्द रहता था. कह रही मैं ज्यादा लंबा समय बैठ नहीं सकती थी. जब ये यहाँ आई है, आपने पहले दिन कहा चंगाई बच्चों की रोटी है. इन्होंने उसको पकड़ लिया और आज ये पूरी तरह चंगी हो चुकी है, कूद के दिखा रही है, कोई दर्द नहीं है. ये क्या? Sir, I'm from not Nagaland, I'm from Andhra Pradesh. I was also have confused about that healing because I'm theologian. But today your answer hit the theologian that God is still here. Woo! My Jesus is the healer. अपोस्टल जी, यहाँ पे प्रभु चंगाइयाँ कर रहे हैं. ये भाई बता रहे हैं कि जो वुड का लोग होता है, जहाँ पे लकड़ियाँ रखते हैं, ये पूरा इसके लेफ्ट शोल्डर में गिर गया था और 1 साल से वो उठा नहीं पा रहा था, ऐसे नहीं कर पा रहा था. आज प्रार्थना के बाद वो पूरी तरीके से चंगा हो चुका है. Hallelujah. Praise God, Lord. Yes. Come. जो चंगे हो रहे हैं जल्दी से भाग के, आज आखिरी रात है, आखिरी मौका है यीशु को महिमा देने का इस रिवाइवल में. Come on, run to the front.
जिंदा यीशु Apostle. जिंदा So our dear brother here had been suffering from he could not hear. He was deaf for 42 years. He was wearing a hearing aid. 42 years deaf. Yes. Okay. And after receiving healing, he's able to hear completely. कान खुल गया आपका? क्लियर सुनाई दे रहा है? क्लियर सुनाई दे रहा है। 42 years से मशीन पहनते थे। हाँ। अब मशीन की जरूरत नहीं है। अच्छा। Hallelujah! Come on, give him praise. बोलो सब जिंदा जिंदा यीशु जिंदा 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 यीशु अपोस्टल जी, परमेश्वर ने महान चमत्कार यहाँ पे किया है। ये 18 साल का बच्चा जो बचपन से जन्म से सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, आज सुनने लगा है और बोल पा रहा है पहली बार। हालेलुया। Can we quickly bring him on the stage? जल्दी Come आओ। on. Jaldi, come on. I just want to show you this testimony. Why? Because many people, I told you first day, many doubters are going to become believers. So, इसके साथ कौन है? Cousin कौन है? ये बचपन से गूंगा और बहरा था? Yes, sir. पापा। ये बचपन से नहीं बोल सकता था कुछ? बचपन से नहीं बोल सकता था, सुन भी नहीं पाता था, पर अभी जब से प्रेयर हुआ तब से पूरा क्लियर बोलने लगा और आप कहाँ पे रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड कॉलोनी नागा सिमेट्री में रहती हूँ। किसी को डाउट है कि ये एक्टर हैं तो घर का एड्रेस ले लो, जाके चेक कर लेना, डॉक्टर को दिखा देना। Come on, the miracles that we read in the Bible, we are seeing Jesus doing यीशु it. जिंदा 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 यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा जिंदा आवाज उठाकर बोले जिंदा 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 यीशु जिंदा 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 I'm telling you, thousands have been healed in these last 4 days. But I want to tell you, इंडिया को हिला दो अपनी हीलिंग की टेस्टिमनी से. Put it on your social media. Tell this nation that Jesus is the healer. Go to your church this Sunday and testify what Jesus has done for you. Amen. And remember what I told you? Those who don't believe, जो नहीं मानते, अपनी रिपोर्ट उनके मुंह पे चिपका देना. नहीं, थप्पड़ नहीं मारनी, चिपकानी है बस. जिंदा जिंदा यीशु अपोस्टल जी, यहाँ पे परमेश्वर एक्सीडेंट्स के घावों को चंगा कर रहा है. ये बहन बता रही है 4 साल पहले इनके ऑटो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से बैक पेन होता था. रात को सो नहीं पाती थी, जब वो उठती थी तो भी दर्द में उठती थी. डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पाए और पहले दिन जब आप प्रार्थना के बाद वो पूरी तरीके से चंगी हो गई है. कंप्लीट. Can you tell us what used to happen to you? क्या होता था? रात में नहीं सो पाता था. रात को नहीं सो पाता. हाँ. कितने टाइम से? 4 years हो गया. 4 years से. Now what happened first day? जब आप प्रे किया और बताया था कि जिसको कहाँ दर्द हो रहा है वो चेक करो, हील हो गया ना. नहीं तो हम चेक किया, बैंड किया, ऐसा लेफ्ट राइट टर्न किया तो सब ठीक हो गया. सारा दर्द चला गया. हाँ. Thank you, Jesus. Jesus is the healer. Okay, I want to say something.
I bought some books where I have taught about authority and faith. Okay. We used to sell them for 300 rupees. But just take it for 50 rupees, okay? But I want you to read the book. Anybody who wants to take it. Okay, I'm not saying free. I'm giving free. I'm not saying free because I don't want you guys to fight and punch one another. But I want you to read that book. Get the word. Get the word in you. And I'm telling you, oh, you will be a victorious generation. Okay? So people who are hearing my voice in the bookstall, don't sell it for 300 anymore. All the books that are remaining. If some person comes and they cannot afford it, please give it to them for free. Yeah, if there is any person who does not have money but he has heart, please give the book for free. Yes, Pastor Sam, what has happened? अपोस्टल जी, ये भाई 2021 से लकवा ग्रसित था. आज इसको 2 लोग पकड़ के लेके आए थे, लेकिन अब ये खुद चल पा रहा है 2021 के बाद. He was paralyzed. Come on. Come on. Come on, come on, come on. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord G. Come on, give him praise, give him glory. यीशु जिंदा जिंदा यीशु जिंदा 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 यीशु एक minute, Pastor. There's such a good news, man. God is so good. The video that we showed you by mistake of that auntie, we just got a report that she's also healed. Hallelujah. Come on, can you lift up your hands? Oh man, what a privilege. What a privilege to see what Jesus is doing in our generation. Yes, Pastor Sam, yes. Apostle, our dear sister here has been healed of multiple sicknesses. She could not lift up her hand, but now she's able to lift up her hand completely. She could not hear partially. For 3 years, she's now able to hear partially. We've also checked it, and she was also healed of migraine and as well as sinus. So yeah, she has been Sister, healed. आप सुन नहीं सकते थे अच्छे से? Yes, yes. अभी क्या हुआ? I just knelt down and prayed, and then I got healed from God. You got God healed is from good. that. Yeah. Come on, God bless you. God bless you, sister. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Oh man, every time I see Jesus healing the sick, I fell in love with him more. I love him more. Man, who can be like my Jesus? There is nobody like my Jesus. Nobody can change lives like Jesus. Hallelujah. What a great Savior. Apostle जी, we have 2 marvelous testimonies here. Firstly, इस बच्ची को बाएं हाथ में करंट लग गया था. उसके बाद से इससे मुट्ठी बंद नहीं होती थी और हमेशा हाथ में सूजन और दर्द रहता था. आज भी था जब ये यहाँ पे आई है. जैसे आपने प्रार्थना किया, वो सूजन गायब हो गया है. उसकी पकड़ में स्ट्रेंथ वापस आ गई है. She can move your hand. Hallelujah. 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 और अपोस्टल जी, एक और मार्वलस गवाही है. ये बहन 15 साल से लगभग ब्लरी विजन था. कल जब आपने प्रार्थना की ब्लरी विजन की, इन्होंने बोला अगर मैं चंगी हो गई आज तो मैं कल गवाही दूंगी आके. और प्रभु ने इनको चंगा कर दिया. चश्मा घर छोड़ के आई है. 15 साल का ब्लरी विजन चंगा हो गया है. 15 years, come on. Come on, come on, come on, church. जिंदा जिंदा यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा 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 यीशु जिंदा. Okay, we know the power of God
is flowing. And I'm telling you, Nagaland will be... God is trying to tell Nagaland, hey, I have not changed. I know many people teach God doesn't heal anymore. So many healing testimonies are going to come up. People who don't believe it, they will have to close their ears. Everywhere they go, they are going to hear about how people got healed in this revival. And not just healed. You didn't come here to just get healed. You came here to become an instrument of His healing for others. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, Pastor Sam, हमें भी बता दो क्या हो रहा है? अकेले अकेले कर रहे हो? अपोस्टल जी, इस भाई को 5 साल से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था. डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, नहीं बता पाया. 2 साल दवाई भी खाया, कुछ नहीं हुआ. आज अभी कह रहे हैं जैसे आपने प्रार्थना किया पूरी तरह ठीक हो गया है, सांस ले पा रहा है 5 साल बाद. हालेलुया. Breathing problem lagi saya sama bahan boleh di-share. आप मुझे बताओ भाई, you were not able to breathe अच्छे से? Yes sir, I could not able to breathe for complete 4 to 5 years. Yes, I was taking medicine secretly without telling my parents. And sir, when you just stopped praying, when you ended with your prayer, I felt that I got healed. So I opened my eyes and I tried breathing as quick as possible. And praise the Lord, I got healed. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया. अपोस्टल जी, हमारे साथ ये बहन है, इनको 6 साल से भी ज्यादा साल हो गए कि इनके जो घुटने थे इतने दर्द होते, फिजियोथेरेपी लेते थे और डॉक्टर ने ये बोला था आप नीचे मत बैठिए, अवॉइड करिए. लेकिन ये दूसरे दिन एक्सपेक्ट करके आई, बोली मैं बैठूंगी और आज वो पूरी तरीके से चंगी हो चुकी है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Maybe 1-2 more testimonies and then we are... Who wants to celebrate in this place? Come on. This is something that I declare over my church family, and since you are my family, I want to declare this over you. That you will enter your eternal home with celebration. आप सेलिब्रेट करते करते अपने अनंत के घर में प्रवेश करोगे यीशु के नाम में. Your life will be a celebration of what Jesus has done in the name of Jesus. Your life will be a victory celebration in the name of Jesus. Can you give the biggest praise to Jesus? Hallelujah. Can I request the organizing team to come, please? Oh, you're already here. Okay, I'm so sorry. Okay, so can you come here? And we're going to celebrate. Where are the others? Everyone. Yeah. Can we move the pulpit from this place? See, we know Naga people are very shy, so we will make them dance. We're going to dance and then you also dance. Amen. Our life is going to be a dance of victory in Jesus' name.
Are you ready to dance? Okay, yeah, yes. Okay. After, yes. Okay, pray. Okay, all right. Okay, we want to pray for. Some people have sent. They cannot come here, so we're going to pray for these prayer cloths, and then they will be gone, and people will take them and touch the sick, and we're going to get incredible testimonies. I want the entire team to just join me, just lay hands. We are going to do this together. Okay. Yeah. Can we all come? Come on. We all will lay hands together. Heavenly Father, as an act of our faith, we pray, let these clothes be impregnated with the anointing and the power of the Holy Spirit. We declare that, Lord, as these clothes touches the sick bodies, they shall be healed instantly in Jesus' name. Demons shall flee in Jesus' name. Thank you, Father. We declare these clothes to be impregnated, saturated with the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus, we pray, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. This is a gift for me? I'm just kidding. Father, we just pray for your anointing. Amen. And from tonight, you are the anointed vessel. Come on, tell your neighbor, you are the anointed vessel. आप अपने पड़ोसी से कहें, आप अभिषेक बर्तन हो. You have received the anointing आपने अभिषेक पाया. to do great exploits. महान काम करने के लिए. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? We love you, Nagaland! नागालैंड के कोने कोने में यीशु का नाम. नागालैंड के कोने कोने में कुछ है यीशु का नाम. कैसा प्यारा यीशु का नाम. नागालैंड में हालेलुया. नागालैंड के कोने कोने में कुछ है यीशु का नाम. नागालैंड के कोने कोने में कुछ है यीशु का नाम. कैसा प्यारा यीशु का नाम. नागालैंड में हालेलुया. ओ हैया ओ हैया दीमापुर के कोने कोने में कुछ है यीशु का नाम. दीमापुर के कोने कोने में कुछ है यीशु का नाम. कैसा प्यारा यीशु का नाम. दीमापुर में हालेलुया. दीमापुर के कोने में कुछ है यीशु का नाम. दीमापुर के कोने कोने में कुछ है यीशु का नाम. कैसा प्यारा यीशु का नाम. दीमापुर में हालेलुया. ओ दुनिया के कोने कोने में कुछ है यीशु का नाम. दुनिया के कोने कोने में कुछ है
Okay. अभी let's do more. अभी नहीं करें. आनंद की भरपूरी. Okay, amen, hallelujah. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संतोष जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संतोष जीवन में संतुष्टि है। उस पर सब हुई समाप्ति, आरक्षता मिली पापों से मुक्ति। उस पर सब हुई समाप्ति, आरक्षता मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। Are you ready? Sing! भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। ओ मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Hallelujah. So we did the Naga dance. Now you have to do balle balle. Oh, ready? Balle balle. Okay. Yeah. Come on, put your hands up, everybody.
it. Come to the front. Where are the dancers? Dancers. Get the dancers. Lysa. Brennan. Come on. Hey, hey. Everybody put your hands on. बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखी शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखी शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थल्ले नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे Let Nagaland that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let Nagaland. Let Nagaland. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, Nagaland. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise. Hallelujah. Oh, my soul. Praise. We're gonna sing one last song. All glory, all honor to Jesus. We're gonna say, thank you, Jesus. Can you share this? I thank God. Why are you so far away? Come to the front, closer here. All right. Are you
1, 2, 1, 2, 3, go! Pick me up, turn me around. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart. Oh, I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. All right, let's declare this. No, I'm not a slave. Come on. I am free. All right. I am free. Say. I am free. Oh yeah. I am free. Oh yeah. I am free. That's your freedom song. Come on. Say. I am free. I am free. I am free. Hey. I am free. I am free. I am free. Yeah, yeah, yeah. I am free. I am free. I am free. I am free. No, I'm not a Say. slave. I am free. I am free. I am free. I am free. No, I'm not a slave. I am free. I am free. I am free. No, I'm not a slave. I am free. I am free. Say. Yeah. Feet on the solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not a Shout it slave. out. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. I thank God. Hallelujah. Pastor Bob. Oh man, we are very sad that we have to close this now. But hear this. You have been a part of history that God has made in Nagaland. And look at these kids. This is prophetic. This is prophet. This is God trying to say, I am raising a young generation for my glory. No more religious bondage. No more spirit of legalism. No more spirit of slavery. But spirit of sonship. Sons and daughters will rise up from this land. Victorious champions will rise up from this land. All I And if God wills, we will see you next year. And I'm telling you, later in Jesus' name. But if you love us, there is one thing that I want, that you would honor God's word. Become lovers of God's word. We love you. God bless you. God bless you. God bless you.